effective and speedy successes that any other country could achieve. I remember that picture where in the Chandrayaan-2 mission, where after having almost come so close to the surface of the moon, for a small technical reason we were not successful. A lot of naysayers had started trying to run down the Indian mission, run down ISRO, run down our scientists. And for all those naysayers, for all those people who have this negativity about India, जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, उन सब के लिए उस दिन सबक था, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गले लगाया उस समय के इसरो के चेयरमैन को, उनको उनकी क्षमता के ऊपर उनको बधाई देते हुए आगे के लिए, आगे की चुनौतियों के लिए उनको तैयार किया, उनको उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया। मैं समझता हूं वो जो चित्र है वो देश के 140 करोड़ लोगों के में, उनके दिल में, उनके मन में बस गया है। और उस दिन के उस प्रोत्साहन को, उस दिन के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाक्यों को, जैसे उन्होंने पूरे जी जान से अपने जीवन का एक अंश बना लिया और अपने जीवन का मिशन पर आते हुए जिस प्रकार से आगे चले, इतने कम समय में उसके बाद चंद्रयान-3 का सक्सेस, G20 के थोड़े ही दिन पहले, मैं समझता हूं पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मुझे ध्यान है कि जयपुर में हमारी G20 की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की, वाणिज्य और निवेश के मंत्रियों की बैठक चल रही थी। बैठक 24 और 25 अगस्त को होनी थी। उसी की पूर्व संध्या पे 23 अगस्त को ये हमने सभी ने मिलके एक साथ जब मून लैंडिंग देखी चंद्रयान-3 की, जो गौरव हम सबको महसूस हुआ, जिस प्रकार से पूरा देश गौरवान्वित हो रहा था उस दिन, मैं समझता हूं वो इतना इन्फेक्चुअस था, उसका प्रभाव विदेश से आए हुए मंत्रियों के ऊपर भी इतना गहरा था कि लगभग विश्व के सभी बड़ी ताकतों के नेता, सभी बड़े देशों के वाणिज्य और उद्योग से संबंधित, निवेश से संबंधित मंत्रियों ने अपने अपने भाषण में, हमारी मीटिंग में, हर एक ने एक स्वर में भारत की तारीफ की, भारत की उपलब्धता को बहुत ही विशेष बताया, बहुत ही साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, हमारी साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए भारत की सराहना की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी। उस मौके पे भी G20 की मीटिंग में दुनिया भर के नेताओं ने कि अब भारत, इंडिया इज ट्रूली अराइव्ड एट द वर्ल्ड स्टेज, अब भारत विश्व पटल पे अपनी छाप छोड़ रहा है। और ये मैसेज आज भारत पूरे विश्व में गया कि भारत अब बड़ी बड़ी चुनौतियों को सफलतापूर्वक भी पूरा कायम कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। और मैं समझता हूं कि पहले हम सुनते थे यूएस, यूएसएसआर, चाइना, ऐसे देशों ने हजारों लाख करोड़ रुपए खर्च के ये एक एक मिशन किए थे। भारत एक ऐसा देश है जिसने बहुत कम खर्चे पर, बहुत कम लागत पर और अधिकांश जो उसमें पुर्जे लगे वो भारत में बनने के कारण, मेक इन इंडिया के जो जोर लगाया गया उसके कारण आज भारत को एक अलग ही श्रेणी में लेके जाता है। अब कई देश, और उस मीटिंग के दौरान भी कई देश के मंत्रियों ने मुझसे साझा बातचीत की कि अब वो भी चाहते हैं कि स्पेस मिशन में हमारे साथ जुड़े, वो भी चाहते हैं कि उनके भी जो फ्यूचर स्पेस प्लान्स हैं उसमें भारत के साथ साझा भागीदारी करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जॉइंट एंडेवर्स आगे चल के बढ़ाना चाहते हैं स्पेस की तरफ। माननीय उपसभापति महोदय, जो दोनों मिशन लाइफ हुए, लैंडर और रोवर के, इसका जो सराहना हमने अलग अलग पत्रकारों में देखी, उसके 3 प्रमुख जो उद्देश्य थे, द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान-3, वो तीनों इतनी सफलतापूर्वक, इतने प्रिसिशन से
एग्जैक्ट 6:04 पे जो लैंडिंग हुई, वो तीनों जो हमारे लक्ष्य थे, एक था कि सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग हो मून सरफेस के ऊपर, दूसरा था कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सके, दिखा सके रोवर ऑपरेशंस, जो मून पे रोवर बाहर निकला और उसने जो ऑपरेशंस करी, और ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स जो लूनर सरफेस पे करने थे, ये तीनों पे 100% सफलता प्राप्त करना ये हम सबका सौभाग्य है। और मैं अपने पूरे सदन के मेंबर्स की तरफ से आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो टीम स्पेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की केंद्र में और राज्यों में इस विषय के ऊपर चिंता करती है, और जो पूरा इसरो की टीम है जिसने इस पे दिन रात मेहनत करके, विशेषकर जो हमारी महिला साइंटिस्ट हैं, उनको मैं विशेष करके धन्यवाद भी देता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। हमने देखा है गत दिनों में कैसे महिला साइंटिस्ट ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है हमारे अलग अलग स्पेस मिशंस में, और ये महिला साइंटिस्ट आज वास्तव में भारत का गौरव बनी है, और मुझे लगता है हम उसका एक प्रकार से उनको धन्यवाद के रूप में तोहफा आज लोकसभा में, और उम्मीद करते हैं कि वहां से पास होके आज रात तक आ जाए, या तो कल राज्यसभा में हम जब महिला आरक्षण पास करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करेंगे, मैं समझता हूं एक सही मायने में हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी छोटी बिटियाओं के लिए, जिन्होंने इतने बड़े लक्ष्य प्राप्त करने में अपना अमिट छाप छोड़ी है, इतना बड़ा योगदान दिया है, वो भी एक पूरे देश और विश्व को मैसेज जाएगा कि ये देश बहुत कृतज्ञ देश है, ये देश महिलाओं के सम्मान करने में कोई कटौती नहीं करता, और आगे चल के महिलाओं को और बड़े रूप में इस देश के विकास के प्रवाह में जोड़ने के लिए अहम कदम उठा रहे। माननीय उपसभापति महोदय, ये जो विक्रम लैंडर था, जो प्रज्ञान रोवर था, और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, ये भारत में बना। मुझे याद है 2014 में जब मेक इन इंडिया का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, तब कई सारी टिप्पणियां आती थी कि ये मेक इन इंडिया सफल नहीं हो रहा है, मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है, क्या नई चीज करी। पीछे भी हाल में भी कुछ दिनों पहले एक नेता का बयान में पढ़ रहा था, जो एक प्रकार से बड़े ओछे शब्दों में, बहुत छोटे स्तर पर मेक इन इंडिया के मजाक उड़ाने की कोशिश हो रही थी। मैं समझता हूं हमारे इस मिशन ने, चंद्रयान 3 ने और इसरो की कामयाबी ने एक पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया कि भारत में बना हुआ सामान, भारत में बने हुए पुर्जे, भारत में बने हुए अलग अलग जो इस पूरे मिशन में कंपोनेंट्स लगे, इक्विपमेंट लगा, इसने इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, जब वो देखते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज चाहिए, हमें टैलेंट चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए, तो उनको एक देश जो नजर आता है, विश्वसनीय देश, एक विश्वसनीय साझेदारी में भाग लेने वाला पार्टनर, तो वो भारत है। और भारत के ऊपर आज विश्व की भी निगाहें टिकी हुई है, विश्व का विश्वास बना हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, अगर हम डिजाइन कैपेबिलिटीज देखें, तो जो डिजाइन कैपेबिलिटीज डेवलप हुई हैं चंद्रयान 3 के दौरान, उससे हमें आगे चल के बहुत लाभ होगा। और हमने अलग अलग तरीके से देखा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ भारत की विकास यात्रा में सिर्फ स्पेस से, लेकिन हमारी लोकल डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ी तरीके से लाभ देता है। जैसे कि माननीय सदस्य जानते हैं, आप भी भली बात है, आपने देखा है पीएम गति शक्ति, ये क्या है? ये एक प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत के आधारभूत सुविधाएं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देना, और गति देना, और प्रगति को तेज करना, उसका एक साधन है। पीएम गति शक्ति में स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अलग अलग लेयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग अलग लेयर्स ऑफ डेटा जो तैयार किया गया, जो स्पेस से मैपिंग की गई, और इसका काम माननीय उप सभापति जी, प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज से 12-14 साल पहले,
उनके मन में एक कल्पना आई थी कि स्पेस टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम इस्तेमाल भारत में कैसे किया जाए, भारत कैसे लाभ ले सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी का। तब उन्होंने वाइजैक नामक एक संस्था गांधीनगर में एस्टैब्लिश करी और वाइजैक के माध्यम से ये शुरुआत करी कि कैसे भारत के आगे के भविष्य के विकास यात्रा में आधुनिक सुविधाएं और सफलता इंटरनेशनल सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड बिजनेस बना सके। लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां देने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उसके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का जीता जागता उदाहरण अगर कुछ है तो पीएम गति शक्ति है। तो इस प्रकार से स्पेस से जो हम सीखेंगे, जो चंद्रयान 3 की उपलब्धियां होंगी, उससे आगे चल के भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, भारत में किस प्रकार से आगे हमें क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेज पे काम करना है, अलग अलग तरीके से ये स्पेस का रिसर्च भारत को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। और मेरा विश्वास है कि इस उपलब्धि में हम सब मिलके जो आगे के बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं, जो योजनाएं हैं, जो हमारी दूरदर्शी सोच है देश की कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी और हमारे स्पेस मिशंस भारत को आगे लेके जाने में काम करेंगे। ये जो नया उत्साहित भारत है, ये जो एस्पिरेशनल इंडिया की नई आकांक्षाएं हैं, इसको पूरा करने में गगनयान चंद्रयान के बाद आने वाला जो गगनयान मिशन है, जो लगभग 2024 में अनुमानित प्लान है, उसको भी हम कैसे सफल बनाएंगे, उसके लिए हम सब ने इसरो को शुभकामनाएं देनी है। हम सब मिलके एक संदेशा दें कि आगे आने वाले गगनयान के लिए भी इसरो सफल हो, पूरी तरीके से सफल हो। हमारी माता बहनें, हमारे इसरो के साइंटिस्ट जो पूरी लगन के साथ इसमें लगे हुए हैं, उनको हम यहाँ से एक शुभ संदेश दें कि उनका गगनयान मिशन भी सफल हो। हमने ऑलरेडी देखा आदित्य मिशन, जो आदित्य L1 जो सूरज के और भारत के बीच में, जो अर्थ और सन के बीच में यहाँ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पे जाके स्टेशन होगा, जो लैग्रैंज पॉइंट है, वहां से स्टडी करेगा सूर्य की किरणों की ताकत, सूर्य की ताकत को। तो उस पॉइंट तक सफलतापूर्वक पहुंचे, वो रास्ते में है, उसका लॉन्च सक्सेसफुली हो चुका है और वो पहला डेडिकेटेड स्पेसक्राफ्ट मिशन है जो सूर्य को स्टडी करने के लिए यहाँ से भेजा गया है। इसी के साथ साथ एक डेडिकेटेड पोलरीमेट्री मिशन एक्सपोसैट, जो एक्सरे के माध्यम से पोलरोमीटर सैटेलाइट के रूप में बाहर काम करेगा। इस तरीके से हमारी जो नए नए आगे की योजनाएं हैं, उसके लिए हम सब मिलके इस सदन से एक स्वर में एक बड़ा अच्छा संदेश और शुभकामनाएं भेजें। तो एक तरफ बधाई चंद्रयान 3 के सफलता के लिए, दूसरी तरफ शुभेच्छा आगे के बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ये जब एक स्वर में पूरा सदन ये मैसेज भेजेगा, तो मैं समझता हूं कि सभी जो इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोत्साहन हो, चाहे हमारे अफसर हो, चाहे इसरो के साइंटिस्ट हो, हर एक व्यक्ति जो अलग अलग मिशन में अपने अपने पुर्जे, अपने कॉम्पोनेंट बना के योगदान दे रहे, और एक प्रकार से 140 करोड़ देशवासियों का उत्साहवर्धन करने का काम आज पहले ही सिटिंग में, कल पहली सिटिंग थी, आज पहले ही डिस्कशन में हम ये जो संदेश देने जा रहे हैं, ये भी बड़ा शुभ संदेश है। कल यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण देने का काम भी मैं उम्मीद करता हूं कि सर्वसम्मति से जब ये सदन पारित करेगा, तो दो शुभ संदेश, एक तरफ यहाँ का हमारा प्रवेश, आज का ये चंद्रयान 3 का बधाई का और शुभकामनाओं का मैसेज इसरो को, और तीसरा कल महिलाओं को, हमारी माता बहनों को आगे की जो लेजिस्लेटिव भारत की प्रवाह है, जो भारत के आगे आने वाले दिनों में अमृत काल में विकसित भारत बनाने की जो जर्नी रहेगी, उसमें हमारी माता बहनों का, महिलाओं का
आरक्षण देके इस सदन पार्लियामेंट पे और ज्यादा योगदान मिले, उसके लिए जो हम कदम उठाने जा रहे हैं, मैं समझ पार्लियामेंट लोकसभा में और असेंबलीज में दोनों में जो हम कदम उठाने जा रहे हैं, ये तीनों ये शुभ संदेश एक प्रकार से एक नई सुबह लेके इस सेशन को भी यादगार बनाएगा। ये नई सुबह देश की अमृत काल की यात्रा में भी हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण बनेगी और हम सब इसके साक्षी हैं, हम सब इसमें भाग ले रहे हैं। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपने मुझे इस चर्चा को शुरू करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पीयूष गोयल जी। माननीय श्री जयराम रमेश। Thank you, sir. Sir, I rise to speak on a discussion that is entitled India's Glorious Space Journey Marked by Successful Soft Landing of Chandrayaan-3. Sir, listening to the Leader of the House, it appeared as if this glorious space journey started only in 2014, and that the sutradhar of this space journey is the Prime Minister. I want to take this occasion, sir, to revisit this glorious space journey, not to make political debating points, but to pay tribute to a remarkable generation of Indian scientists and technologists who could have worked anywhere in the world, but chose to come back to India in the 1950s and 1960s. Sir, I have before me a government order issued on the 22nd of February 1962. This is the 22nd of February 1962, an office order issued by the Government of India, which reads that the Union Government has set up the Indian National Committee for Space Research. The committee set up on the recommendations of the Scientific Advisory Committee to the Cabinet will advise the government on the promotion of research in and exploration of space and its utilization of peaceful purposes. India's glorious space journey began on the 22nd of February 1962, which was marked by the establishment of the Indian National Committee on Space Research. There were two people who were responsible for getting this INCOSPAR set up. Both were the great scientists of India. One was Homi Bhabha, who was then the chairman of the Scientific Advisory to the Committee to the Cabinet, and the second was Vikram Sarabhai, a great name, a man who had a vision for Indian space, and I expected the Honorable Leader of the House at least to make a passing mention of Vikram Sarabhai. Sir, I'm not yielding. Please. Sir, it was 2 weeks. It was 2 weeks before INCOSPAR was set up that the Prime Minister of India, the then Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, went to Ahmedabad to visit the physical research laboratory that was created by Vikram Sarabhai way back in 1947. Sir, this is a photograph I have of Pandit Nehru with Vikram Sarabhai and E.V. Chitnis in the old Parliament House. You could have seen this photograph. In this new Parliament House, we need a telescope to see each other. I don't have a telescope, sir, but you can take me for my word. This is a photograph of the Prime Minister of India with Vikram Sarabhai, Professor E.V. Chitnis, who is 97 years old and is still alive. He is one of the key figures in this space journey. And in fact, Professor Chitnis's greatest contribution to our space program was the recruitment of a young engineer from the Madras Institute of Technology named APJ Abdul Kalam. Sir, after the establishment of INCOSPAR on the 22nd of February 1962, the second milestone in this glorious space journey was on the 21st of November
1963, when India launched its sounder rocket from Thumba near Trivandrum. This was called TERLS, the Thumba Equatorial Research Launching Station. This was the first sounding rocket launched way back on the 21st of November 1963. And this was made possible because of Vikram Sarabhai, because of H.G.K. Murthy, because of Abdul Kalam, because of E.V. Chitnis, and a large number of scientists and technologists. So ISRO was created on the 15th of August 1969. This was when Vikram Sarabhai created the Indian Space Research Organization to give a developmental boost to the Indian space program. So the Indian space program is the only program in the world that has not come out of the military sector. It has been a civilian program all through. The Indian space program is the only program to have a developmental thrust, the use of space for remote sensing, the use of space for rural development, the use of space for communication, for weather forecasting. This is being the hallmark of India's space program going back to the creation of ISRO on the 15th of August, 1969. So, on the 25th of December, 1971, unfortunately, Vikram Sarabhai passed away very suddenly at the young age of 52. He died of a heart attack in Kovalam Beach near Trivandrum. The Indian space program was then faced with a huge crisis. It had lost its Karta Data. It had lost its Nirmata. It had lost its visionary, Vikram Sarabhai, who had lived and dreamt of India as a space power. It was then that the then Prime Minister of India, Indira Gandhi, took what I consider to be the most important step that has made India the space power that we are all proud of today. So she wrote a letter to an Indian scientist who was then taking a sabbatical at the famous California Institute of Technology in Pasadena in California. The name of this scientist is Satish Dhawan, and it is in his honor that our launch center in Sriharikota is called the Satish Dhawan Launch Center. So, Indira Gandhi wrote a letter on the 7th of January 1972, and I wish to quote a few lines from this letter. This is the Prime Minister of India writing, "Dear Dr. Dhawan, Vikram's sudden and tragic death has deprived our entire space research program of leadership. You are aware of the heavy investment we have made in it. The 10-year profile of the development of space shows the extent of our commitment. We cannot afford to allow the entire organization to crumble. I should like you to accept the stewardship of our space program, which I am proposing to separate from the Atomic Energy Commission. Till 1972, space and atomic energy were together. But it is in 1972 that space gets separated from the Atomic Energy Commission. It will be for you to structure this new organization. Please let me know urgently when I may expect you to return and what arrangements you would like us to make for the interim period. I hope you will respond to an emergency situation in a sensitive area of national importance." This is a letter written by the Prime Minister of India to a scientist taking a sabbatical in California, who was then the director of the Indian Institute of Science, Satish Dhawan. So Satish Dhawan immediately accepted the offer of the Prime Minister. He put some conditions that he would like ISRO to be headquartered in Bangalore. He would not like to be posted in New Delhi, that he would like to continue as the director of the Indian Institute of Science, and he would like full freedom to run ISRO the way it should be run. The Prime Minister of India
accepted and acceded to all these conditions. So when he came back to India, when he took over as chairman of ISRO, her secretary, Mr. P.N. Haksar, sent Mrs. Gandhi a note. And I was fortunate enough to get a copy of this note in the archives. And Mr. Haksar wrote on the 25th of May, 1972, to the Prime Minister, Dr. Satish Dhawan is an extremely sensitive human being. Hitherto, he has led a relatively cloistered life, devoting himself to the pursuit of his own scientific specialty in the field of aerodynamics. I know he has many doubts and hesitations in accepting the responsibility of heading our space organization. And if he were to opt out of it, we literally have no one at present as the second best choice. It is therefore of vital importance that our Prime Minister should express in her own way her appreciation of the high sense of duty which has led Dr. Dhawan to respond to the PM's call to him. It is equally necessary to say that Dr. Dhawan will continue to receive her personal support in sorting out any problems he may run up against any administrative and other fields, and that Dr. Dhawan should not hesitate in coming to the Prime Minister, and that he will always have direct access. So it is from this day onwards that Prime Ministers of India have held direct control of the Department of Space. It is from this day onwards that the chairman of ISRO, the chairman of the Space Commission, the Secretary Department of Space, three roles combined in one individual, have only reported to the Prime Minister and nobody else. So the glorious space journey that the leader of the House wants us to believe started in 2014. The first milestone was on the 22nd of February, 1962. The glorious journey that the leader of the House wants us to believe started in 2014, had its second milestone on the 15th of August, 1969, with the creation of ISRO. The glorious journey that the leader of the House wants us to believe begins in 2014, had its third milestone in 1972, July, when Satish Dhawan became the chairman of ISRO. Sir, the success of Chandrayaan-3 is based on the competencies, the capabilities, the capacities that have been created over a 60-year period. We launched satellites, but we first launched satellites on Soviet rockets. We did not have a satellite launch vehicle. In July of 1979, our first SLV launch failed. Dr. Kalam was in tears. So Dr. Satish Dhawan said, I am your leader. I will take responsibility for the failure. You sit at the back. That is leadership. In August of 1980, the SLV-3 succeeded. Dr. Dhawan said to Kalam, Kalam, you take credit for this. I will sit at the back. This is leadership. Leadership is not taking credit when things are going good and run away when the things are going bad. Leadership is when you have the courage to take the responsibility for things that are going wrong as much as you take credit when things are going right. So this is the milestones of a successful journey, sir. There have been many scientists, and I want to recall, I have mentioned Homi Bhabha, I have mentioned Vikram Sarabhai, I have mentioned Abdul Kalam. There's a great scientist of India who is forgotten today. He is the only scientist who has worked and contributed for a nuclear program as well as for our space program. And if you go to the Vikram Sarabhai Space Center in Thiruvananthapuram, you will see a statue of him in the space organization headquarters. His name is Brahma Prakash. He's probably one of the greatest metallurgists that India has produced. And he made a huge difference to our space program and to our
atomic energy program. We had chairman. We had Satish Dhawan, U.R. Rao, Madhavan Nair, Kasturi Rangan, Radhakrishnan, Shivan, and now, of course, we have Somnath. Each of them have made contributions because the political leadership has given them the freedom to make those contributions. Sir, I also want to say that India's space program has always had a developmental orientation. It has always been space for development, space for communication, space for rural development, space for weather forecasting, space for identifying sources of water. Indian scientists and technologists have never seen India's space program as a symbol of Indian nationalism. It has always been seen in a developmental perspective. It has always been seen as an instrument of fulfilling developmental aspirations. And that's why we had INSAT, the Indian National Communication Satellite. And it is because of INSAT that we improved our weather forecasting. We located sources of water. We created new maps. We created platforms like Bhuvan. So while it is natural for all of us to take pride, I would like to urge all of us to please look at our space program fundamentally as an instrument of development and not as an instrument of muscular nationalism. This has been the hallmark of India's space program for the last 60 years. And let it be in that spirit with which it was founded by our scientists and technologists. So, I am entirely in agreement with the Prime Minister when he said yesterday that the Chandrayaan-3 achievement creates a new excitement for science. But sir, what is the point creating an excitement of science when you're removing Darwin's theory of evolution from textbooks? What is the importance of creating excitement of science when you reject Newton, you reject Einstein? You think all knowledge was available to India 2000 years ago. Sir, that is not a scientific temper. Scientific temper is the spirit of inquiry, is a spirit of questioning. We have had glorious tradition. We have had glorious tradition in mathematics. We have had a glorious tradition in metallurgy. We have a glorious tradition in astronomy. But, sir, let us take pride in our past, but let us not think that all of modern science, all of modern technology was known to us 2000 years ago. We have to move with the times. That is the scientific temper. That is the scientific spirit. If you reject science, if you do not give your scientific institutions freedom, if you do not allow scientific endeavor to flourish in a spirit of professionalism, you can have all the Chandrayaans of the world, but it is not going to make a difference to the minds of the young. So we have to create a scientific spirit, the spirit of questioning, the spirit of inquiry, the spirit of doubt. That is the spirit of science, which I hope will be created by this excitement. So, along with Chandrayaan-3, let us not forget Chandrayaan-1. Chandrayaan-1 was launched in 2008. And I have no hesitation in saying that the first announcement of Chandrayaan was by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on the 15th of August in 2003. After 2003, you had Chandrayaan-1 in 2008, you had Chandrayaan-2 in 2019, and you have Chandrayaan-3 in 2023. What does it mean? It means there is continuity in governance. If a Prime Minister refuses to acknowledge continuity in governance, if a Prime Minister believes that the world has started only when I became Prime Minister, if a Prime Minister believes that Indian science has become great, that the Indian space program has become great
only when I became Prime Minister. Sir, I beg to differ. Let us take, along with Chandrayaan-1, Aditya L1, which was also a great success. We have not mentioned it in your resolution. But this Aditya L1, the solar laboratory, which was launched 1 week after Chandrayaan-3. So when did Aditya 1 start? Aditya 1 started in the year 2006. It took 17 years for Aditya L1. Sir, can I finish? 70 years for Aditya L1 to be conceived, to be planned, to be executed, and to be launched. The Honorable Leader of the House said, we are now making things in India. So we have always been making things in India. Larsen & Toubro, Walchand Nagar Industries. There are so many Indian companies which with the Indian space program going back to the 70s. To say that suddenly after 2014, we have started making things for our space program is a complete distortion of facts. In fact, the Indian space program has always been based on creative partnerships with the Indian private sector and Indian public sector. Our nuclear reactors are made in India. Our rockets are made in India. Our launchers are made in India. Our satellites are made in India. And they were being made in India before 2014. Sir, I don't know what your intention is, whether you want to pass a resolution at the end of the discussion. But if you do want to pass, sir, let me finish, sir. If you do want to pass, please acknowledge that the capabilities, competencies, and capacities that have resulted in Chandrayaan-3's success are the results of investments made over the last 60 years. These are based on contributions of successive prime ministers. These are based on contributions of a large number of Indian scientists, large number of Indian technologists, many of whom we don't even know of, many of whom we don't even acknowledge. But I think today is the day when we should salute our Indian scientific community, our Indian technological community. So, it is the Indian scientists and Indian technologists who gave India the Green Revolution in the 1970s. It is Indian scientists and Indian technologists who gave India the White Revolution in the 1970s. It is Indian scientists and Indian technologists which have created our missile development program, the Agnis and the Prithvis and the Nags. And it is Indian scientists and Indian technologists who have given our space program the profile in the world that it has today. And I want to say one thing about these scientists and engineers. All the newspaper headlines, all our talk is based on our elite institutions of learning. I happen to come from one of them. But I have no hesitation in saying that the contributions in the space program have come from men and women who are graduates of government engineering colleges, of lesser known engineering colleges. They are not from IITs, they're not from IIMs, but they are from colleges in Kollam, colleges in Trivandrum, colleges in Surat, colleges in Pune, colleges in Bhopal, in Rajasthan, colleges in Indore, colleges in Jaipur. This is what colleges in Chennai. Sir, this is the strength of Indian science. The strength of Indian science doesn't come from 5 institutes or 10 institutes or 15 institutes. The strength of Indian science comes from a very large population of engineering institutions, which we have to nurture, which we have to upgrade, which we have to recognize, and we must give freedom for them to operate.
So, sir, I associate myself with the sentiments of the leader of the House, who has not heard whatever I have said because he's been busy in conversation with the person next to him throughout. He has been busy in conversation throughout. No. Take a Sir, Jairam, now you have made a reflection. Let him react. Little. He has. And before that, Jairam was on right track. Jairam, you were on right track. But when I took the seat, you got little political. What is this? From science, you traveled to politics. Sir, I had got up in between also. Unfortunately, Jairam thought, Honorable Chairman, sir. You are politicalized. सर हमारा पुराना रिश्ता है सर, हमारा पुराना रिश्ता है और ये बड़े इन्होंने कुछ साल पहले आइंस्टाइन और न्यूटन को कंफ्यूज भी कर दिया था। पुराना उसको याद रिश्ता नहीं दिलाऊंगा उनको, पुराना पर रिश्ता आज उनसे भाषण सुनना पड़ा, प्रवचन सुनना पड़ा। पुराना कि हमारे रिश्ता स्पेस प्रोग्राम का क्या उपलब्धियां हैं। पुराना रिश्ता और पुराना घाव So sir, मीठा दर्द देता है। Sir, I associate myself with the leader of the House. We acknowledge, we salute, we applaud ISRO, the past members of ISRO family, the present members of ISRO family. We congratulate our Indian scientists, we congratulate our Indian technologists. I am sure that many more achievements are there in the years to come. But sir, I will only end by pleading that we need to give our scientific and technological institutions full freedom. We need to give our scientific and technological institutions full independence and professionalism. And we need to free our scientific and technological institutions of any political patronage and political interference and political intervention. So let us on that thought, acknowledge the glorious space journey that we have had. And let us also acknowledge the milestones that we have gone through, even though the Prime Minister and the Leader of the House may choose to airbrush them away from history. They are a fact of life. They cannot be erased from history. They are very much part of our space journey. I thought that it is important for me to remind the House where we have come from, the journey that we have taken, the achievements that we have had, the people who have contributed, rather than fall victim to this new impression that has been created that this entire accomplishment of Chandrayaan-3 and Aditya L1 is the result of only one individual. Thank you, sir. Sri Jawar. Okay. Got up as soon as Jairam initiated, and you're right, he started on the right track. I had got up, unfortunately, he did yield, only to say I fully agree with him and associate with him when he was talking about the journey. But now, since he has also taken it to a political level, I have only two comments to make, sir. Of course, the journey is extremely important. We have all assembled here. We are all going to speak about various aspects of the journey, and we have many other speakers who will be delving on who played what role, who provided what kind of funding support, who made this whole mission really get the kind of speed and scale that made it a success. But at the end of the day, I'm sure my honorable colleague and friend, Jairam, will also appreciate that people run many races. There are marathons run, there are sprints run, there are 100 meters, 200 meters, 42 kilometers, all sorts of races. But ultimately, one must also acknowledge that it's the Your turn will grit come. and determination that makes the winner win.
But on the other point where he made a personal comment of me, well, I'm sure everybody is human and everybody can make mistakes. Honorable members. I may not be as infallible as Mr. Jairam Ramesh. He's of course infallible. Please. He has never made any mistakes in life. I have very openly and in public acknowledged I made a mistake at that point of time in the rush of speaking. But I have not made the kind of colossal mistakes that my friend Jairam Ramesh has done when it comes to killing the development journey of India. In so many ways, my friends from Andhra and Telangana are still suffering for the irrational way in which, as the architect of the split of Andhra Pradesh, he left both countries, both states in trouble. I have not politicized it. I have not spoken about his failures when it comes to environment. I have not spoken about how he became an impediment to the very progress of the nation of infrastructure development. I think we can leave Please, that no, take it. Honorable members, please. One second, I'll come to you. I'll come. Please take your seat. Please. Please. Honorable members, I hope the comment I'm making now will be appreciated. The intellectual level of the House is very high. About 3 decades ago, I was in Rajya Sabha as a junior minister. A very distinguished member was making a scholarly address, as Jairam made. At that point of time, there was entry of another member. It is in the context of leader of the House saying, I fully agree with him. I'm on that. So when that member entered, the speaker got worried that member will unsettle him. So immediately says, even my very good learned friend agrees with me, so that he doesn't say otherwise. And came the swift comment, fools never differ. That was the comment. No, I said you have to understand, sir. I said it with apologetic mode. That if these two have agreed, we have to see in several perspectives. Mr. Jawar Sarkar, you'll take a time, sir. Sir, What did you say, sir? One second. One second. Look at the rejoinder of the leader of the House No. after such a brilliant speech, bringing in Telangana and division of Andhra Pradesh. Honorable Sir, that's members. actually shameful. One second. No, it He is took a punt deleted. at me, I took a It is punt at him. deleted. Where is the shamefulness? Where is Please. the shamefulness? I Use think it is between two deleted. friends, don't come in the way of that. The comment is not on record. And honorable members, after a long time, we had a good debate. After a long time, the people were informed. Maybe there is a political put which will be there both sides and all sides. But after a long time, we are on track. And therefore, we must appreciate it. My light comment was in that direction only. Let us play. No. I'll look into it. But all I'm saying is, after a long time, we have had some return to a situation where outside people will get some knowledge. They will get inspired. All sides. You want to say something, ma'am? Yes, ma'am. Well, one of the greatest artists, and I have admired her for a long time, several decades. If she associates with sentiment, it's a great positive gain for all of us. Mr. Jawar Sarkar, and he brings on the table huge bureaucratic experience. Mr. Jawar Sarkar. Thank you, sir. As I can't see any clock, I hope my time starts now. Sir, the first point that I would like to make is across the House. 21 minutes. We are Indians first
And as an Indian, we take immense pride in the Chandrayaan mission. We take immense pride in the scientific achievements of India, irrespective of what part of India we come from, what we represent. That is the first basic point that we have to remember. India is a continuum. India is eternal. And we cannot slice a part of India and say, this was my part and all the credit happened during this part. All the discredit happened during that part. We were all part of a continuum. When we talk of Chandrayaan, Mr. Jairam Ramesh has explained in great detail, the chair also has explained in great detail, the whole journey of Chandrayaan, and that it spans for 6 decades and more. Numerous individuals have contributed to it. Today is a time when we need to remember them. We need to celebrate the moment, but we also need to remember our history. We also need to celebrate history. So I'll begin with where Mr. Jairam Ramesh said, the great contribution of Pandit Nehru to the whole episode, to the whole journey. As Indians, no one can deny, I am not speaking parochially, no one can deny the immense contribution of the man who introduced scientific temper in India, the man who introduced all forms of scientific research. Vikram Sarabhai. We have come to a new house and there should be a new approach. Instead of only political leaders, we should celebrate the images, the statues of Vikram Sarabhai, of Abdul Kalam, of Homi Bhabha. These are the ones who took us to where we are. We have to admit that it is this, the great leadership, the great vision, the unending toil of Homi Bhabha, of Satish Dhawan, of Vikram Sarabhai, of Abdul Kalam, where we are today, where Abdul Kalam, where we are today. We also cannot acknowledge or disacknowledge or deny the role played by the prime ministers. The present prime minister must have surely contributed to this great journey. But that does not mean that earlier prime ministers who laid the path did not contribute and should not be forgotten. As an Indian, my heart leaps when I see our space launch vehicles propel these satellites of other countries and place them in space. We do a big favor to the rest of humanity, to other nations, and my heart leaps. But my heart is big. As an Indian, as a person who shares the timelessness of India, we should have a big heart. The big heart that not only takes space launch vehicles, take only satellites, but also propels ideas. My heart leaps with joy for another reason. And the reason is that science is finally gaining over superstition. We have to believe in both experimentation, in empiricism and evidence before we open our mouths. Before we open our mouths, we must think of the consequences of what we are saying. Experimentation, empiricism and evidence. How can someone say that Ganesha's head was placed by plastic surgery? We had his Chaturthi yesterday. How we believe in the greatness of Ganesh. But how can you say that his head was placed by plastic surgery? How can you talk of stem cell surgery, stem cell science, bringing in a particular large section in the Mahabharata? We have to have, you have to have both faith in something and faith and a strong belief in rationality. Personally, I don't find any great conflict between a faith in something and rationality. Others may, I don't. As an Indian, I can move along with faith and I can also move along with rationality. But I would not ever like to see the date
when faith, superstition, and backwardness trample upon the fruits of science. We have the science minister who comes and says that we reject Darwin. We have another minister who says we reject Einstein. For God's sake, if you reject science, you cannot celebrate science just because the timing was such. You cannot reap the benefits of a timing. Who said we you're a minister of the great Republic of India. You cannot make these statements. Please refrain, the leaders. I beseech of you, please restrain them from making irresponsible statements. A vice chancellor of Andhra University talks about stem cell research. A chief minister talks of Mahabharata, talks of internet and space communication during the age of Mahabharata. Let us from this lesson, let us from this moment take an oath that before we make unscientific comments, we will restrain ourselves, we will stick to science so that we have many more Chandrayans, we have many more Adityas, we have a superior make in India. Since people were talking about contribution, a very important point that we need to remember is that this contribution of Chandrayaan reveals that it is the smaller technological colleges of India that are not in the limelight. Non-IITs, if I may put it bluntly, it is the non-IITs that have landed India into such a glorious position. We are feeding on IITs, but many of the products of IITs are going abroad to serve the interest of world capitalism. To serve the interest of world capitalism, to serve the interest of world domination. Why are we doing it? We need to shift our emphasis to our smaller colleges that are produced. Bengal, incidentally, has sent 31 in the ISRO. We could have said more about it. Now, when I mentioned about superstitions, I also come to two spoiler points. We have spoken about the greatness of ISRO, but we have not mentioned one word about the Devas Antriksh scandal. The Devas Antriksh scandal remains alive till today. A few months ago, the Delhi High Court has pronounced a judgment which will make you shiver. They say there is poison in the seed. The entire thing is a poisoned effort. It doesn't matter to me which regime did it. No regimes get into such great detail. It doesn't matter. We should have closed this chapter. We should have punished them because we remain vulnerable to an international fraud of something like 30,000 crores. Why should we pay it? Just because some technocrat made a dirty deal. We talk of the Nambi effect, we celebrate. We can celebrate science, we can celebrate the effects of science, we can celebrate our victory. Do not the chess and bring politics into it. This brings me to a point where I say that if you want to really move forward with more Chandrayans, with more Adityas, with more progress in this domain, free science. Free science. You have made science subservient to the rules of the bureaucracy. You have created departments and ministries of science where you have placed scientists, but the rules remain the same. The rules remain the same. You have to have a separate set of rules. You have to go in for faith. You have to allow them to function, not shackle them with bureaucratic rules. My heart leaps when I hear that India has joined the 6 nations for the National Quantum Mission. This National Quantum Mission will take India forward. Whether X regime stays or Y regime comes or the Z regime goes, it doesn't matter. This permanent contribution to the quantum mission will take India forward. We should move higher. We already have moved high on the innovation index.
In the world over, they look at us to see how much we have innovated, not how much we have talked. How many patents have we filed? This is hard fact. And we have actually gone up, but we need to go further up. This is where the focus should be. The tragic point about Indian science is that even the budget of ISRO has been cut by 8%. The tragic point of Indian science, the tragic part of Indian science is that we do not contribute enough to R&D, research and development. It's an international shame. I'm saying, Minister Sirs, it's an international shame because when we make claims, we must substantiate claims. Our contribution of the GDP to research and development is 0.65%, out of which 4% is contributed. 4% is contributed by the state sector, that is the government sector, and only 0.2% is contributed by the corporate sector in India. It is this same corporate sector that you have allowed a 4 lakh crore remission. I am repeating, you have remitted 4 lakh crores by way of taxes from 2019. What have you got in return? Can you make them contribute 0.5% more? 0.5% more? When we talk, this is the remission of income tax, what we call the corporation tax. By way of favors, I am repeating the point, that 12.5 lakh crores, I am repeating, 12.5 lakh crores of the bank customers' money has been evaporated, has been extinguished, has been written off to favor big corporates. A big corporate who belongs to a political party, who was also a member of this house, has got away with 5,000 crores. 5,000 crores of remission yesterday. My submission, madam, my submission is not politics. My submission is that this is the type of money, that could get to help the science sector with more funding. That is all. All I'm saying is don't talk of lack of resources. Say that we have resources. They have gone in the wrong directions. But now that we are conscious of our capabilities in science and technology, in industry, in Make in India, let us put more money in research and development. And where do we get the money from? I have mentioned already the 5,000 crores that has been remitted. Do not permit these things to go on. We have had a long discussion on the space mission. We have had an erudite discussion by Jairam Ramesh, by the Honorable Chair, by the Leader of the House. I thank all of you, but we should have found time not only for space and the moon, but also for Manipur. We have had no time at all to discuss Manipur. With these words, I thank you and I support the resolution in favor of congratulating Indian science as a whole for several generations. Thank you. Sri Trachtoy Sabha. Thank you, Madam Chairperson. I'm very proud to participate in the discussion of India's glorious space marked by successful soft landing of Chandrayaan-3 on the moon, as a citizen of India and not of Bharat. Really, it's a proud moment. The whole world is celebrating. Chandrayaan-3 has landed in the moon very softly, and the lander and rover are doing their works very softly. But we landed in this new parliament building and only turmoil and turbulence are seen for the past 2 days. That is moon and this is parliament. Very happy moment that India is the first country to have landed in the south pole of the moon, which is being celebrated across the world.
though it stands fourth among the other countries who have reached the moon. After this successful mission, India's space industry, exploration industry is being talked much about in a big and proud way across the world. And the Indian spacecrafts are being considered and seen as milestones of this sector. All this credit goes to the team of the ISRO. The relentless pursuit, the dedication, and their passion has made this country globally very famous. And I don't want to repeat what Mr. Jairam Ramesh told or Mr. Sarkar spoke. Yes, it's long. And Vikram Sarabhai, who has to be recollected at this moment, started the ISRO journey from a church. The church gave its praying space for Vikram Sarabhai to launch his first rocket when he was searching for a suitable space. So for this, no caste, no religion, no anything, it is India. And India has traveled a long way, and now we are reaching to heights which is being appreciated. So very importantly, I want to make here something very emphatically. The mission director of this Chandrayaan-3, which is being very much celebrated, is Mr. Veera Muthuvel. He is from Viluppuram, Tamil Nadu, where our finance minister has also studied schooling. And he studied in a government school. He went to Coimbatore and did his engineering in Lakshmi Engineering. And then he came to Tiruchi, to my place, and did his NIT. And now he is considered to be a very shining example for all the aspiring scientists and engineers who are indulged in aerospace. And added to that is Chandrayaan-2. It is one Vanitha Muttaya. She is from Chennai, very ordinary, humble family. She also studied from a government school, studied in various engineering colleges in Tamil Nadu, and now she was the project director of Chandrayaan-2. And Chandrayaan-1, Mailsamy Annadurai, who is called as the Moon Man. He was the first one. 1969, Apollo landed in the moon with Armstrong, but they returned. But it was the mission of Mailsamy Annadurai which came with the result that there is water is available in the moon, and that is being held across the world. He is responsible for 60 satellites which have been successfully launched by the ISRO. He is also from very humble family. He studied in a government school and have achieved. And now the Aditya #1, Aditya 1, going to explore the sun. The mission director is one Nisha Shaji Sultana from Sengote of Tamil Nadu, southern end of Tamil Nadu. She also is from a very humble family, and she studied in a government school and did her engineering. So what has been established by all these things means, to achieve something, a person need not study in a government school. The person need not go abroad to get their education. And all these students and all these engineers who have succeeded are from Tamil medium school. And their second language is only English. So to reach the space, Veera Muthuvel, the successful mission director of Viluppuram, started from Viluppuram and landed in the moon without Hindi and Sanskrit. So we are very proud to say, these scientists have not only taken the position of India globally, that India's ISRO space exploration is par excellence than the developed countries. So also they have established even persons from ordinary family who are expertised in their own mother tongue and having English as their link language can successfully achieve many things. So this is a very, very important thing we have learned in this, and we have to compliment every one of the scientists. Sivan, who was the former chairman of ISRO from Kanyakumari, and now the chairman, Mr. Somnath, all have made us very proud. And this parliament, cutting across the political parties, as I said, as citizens of India and responsible members of parliament, and I from DMK party, Veera Muthuvel was immediately called and being appreciated by our Chief Minister, M.K. Stalin, after the mission was successful. So we, as members of parliament, with all responsibility and with proudness,
let us compliment and congratulate the team of ISRO for having taken India globally to a very, very remarkable place. Thank you very much. Thank you. Sri Sandeep Kumar Pathak. बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन सर। आज मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं इस बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता के लिए, और सबसे ज्यादा उन वैज्ञानिकों को और उन लीडर्स को जिन्होंने इस पे कंट्रीब्यूट किया है। आपको ये बताना चाहूंगा कि स्पेस मिशन की शुरुआत स्वतंत्रता से बहुत पहले हो गई थी। कलकत्ता में प्रोफेसर मित्रा थे, सीवी रमन साहब थे, और आते आते स्वतंत्रता के बाद फिर विक्रम साराभाई और होमी भाभा, इन लोगों ने एक ऐसी लीडरशिप, साइंटिफिक लीडरशिप की नींव रखी जो आने वाले समय में आज इसरो का जो आज स्वरूप देखने को मिल रहा है उसका एक प्रमुख कारण थे। 1960 में ही सबसे पहले इंडियन नेशनल कमेटी बनी थी, बाद में फिर उसका नाम इसरो किया गया था, जो जयराम जी ने बड़े डिटेल्ड में इसके बारे में बताया है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इसरो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती थी और बाद में फिर उसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में बनाकर अलग किया गया और होमी भाभा को उसको सेक्रेटरी बनाया गया और विक्रम साराभाई जो साइंटिस्ट थे उनको इसका प्रमुख बनाया गया इस इंस्टीट्यूट का। ये सबको जानना चाहिए कि 10 इंस्टीट्यूशन के बिल्ड होने के 10 साल के अंदर ही सबसे पहला सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च कर दिया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 20 साल होते होते जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं इंडिया ने वो तैयार कर लिया था और 20वें साल के पहले ही अपने खुद के व्हीकल से अपने सैटेलाइट लॉन्च करने शुरू कर दिए थे। जीएसएलवी, पीएसएलवी ऐसे लॉन्च व्हीकल हैं जिसमें देश के ही नहीं दूसरे देशों के भी जो सैटेलाइट है उसको अंतरिक्ष में स्थापित करने का काम कर रही है, विदेशों के उनके लिए भी। प्रश्न आज ये नहीं है, मूल प्रश्न को समझना पड़ेगा। मूल प्रश्न क्या है कि भारत ने स्पेस साइंस में इतना अच्छा कैसे कर लिया। आज कई सारे दूसरे संस्थाएं हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, उन दूसरी संस्थाओं को क्या हुआ, वो कहां पीछे रह गए। इसरो ने ऐसा क्या, भारत ने ऐसा क्या किया स्पेस के क्षेत्र में जो इतना आगे कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एक व्यक्ति, मैं भी साइंटिस्ट हूं, मैंने राजनीति में आने से पहले साइंस किया है, मैं अच्छी तरह से समझता हूं इस बात को। किसी एक साइंटिस्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है संस्था, और उससे भी महत्वपूर्ण होता है उस संस्था को बनाने वाले लीडरशिप की। आज संभव है कि हम सबके राजनीतिक मूल्य और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद नहीं किया गया तो वो बेमानी होगी। आपको मैं याद दिला दूं, आजादी के बाद हमारे देश की परिस्थिति ऐसी थी कि कई जगहों पर खाने के लिए पर्याप्त अन्न भी नहीं थे। जब देश में पर्याप्त अन्न भी नहीं था उस समय कोई व्यक्ति कैसे ये सोच सकता है कि पैसा स्पेस साइंस में लगाना है। राजनीतिक रूप से उनको बहुत विरोध हुआ होगा निश्चित रूप से, लेकिन उन सारे विरोधों को अलग रखते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक दूरदृष्टता और स्पष्टता दिखाई। इसको कहते हैं लीडरशिप। उन्होंने ऐसी लीडरशिप, आज अगर आप देखें कि भारत में और पाकिस्तान का सबसे, जहां भारत है और जहां पाकिस्तान है, उसका मूल कारण क्या है कि भारत को आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू मिले और पाकिस्तान को पहले प्रधानमंत्री के रूप में जिन्ना मिले। यही एक दो मूल कारण है कि पाकिस्तान आज कहां है और भारत आज कहां है। हमारे कई सारे मतभेद हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में सहमत हो, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में जो नेहरू जी ने जो काम किया उसको पूरे देश को, पूरा देश उसको मानती है और उनकी लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अनवरत रहना होगा। आपको फिर विजन क्या था जब ये इसरो को बनाए? विजन ये नहीं था कि छाती पीट पीट के दूसरों को अपनी ताकत का एहसास कराना है। विजन ये नहीं था कि अपने आप में ताकत एकत्रित करना है। विजन ये था कि साइंस और टेक्नोलॉजी को जनमानस के हित में कैसे उपयोग किया जाएगा। यही एक उद्वेलित और अंडरलाइन रीजन था जिसके कारण नेहरू जी ने इस पर भरोसा दिखाया था।
आज जितने भी आप देखते हैं, चाहे मौसम विभाग से संबंधित जानकारी हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कई सारे क्षेत्रों में स्पेस टेक्नोलॉजी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके कारण ही आज दूसरे साइंस के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ पाए आज के। लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि क्या नेहरू जी अकेले कर पाते वो? क्या राजनीतिक परिस्थितियां अकेले अलाउ करती? संभव नहीं है। सरदार पटेल जी भी थे, उन्होंने देश में उस समय राजनीतिक स्थिरता लाई। अंबेडकर भी थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश को एक ऐसा महान कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो एक टीम वर्क होता है, किसी भी देश के विकास के लिए टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो आज मुझे लगता है गैर राजनीतिक दलों में भी और अपने खुद के राजनीतिक सभी दलों में भी इस तरीके की टीम वर्क का अभाव है। विजन बड़ा साफ था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग देश के हित के लिए करना है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, नींव का पत्थर अगर सीधा लगता है तो बाकी के पत्थर भी सीधे लगते जाते हैं और दीवार सीधी होती है। अगर नींव का पत्थर ही टेढ़ा लग जाए तो कोई कोशिश कितनी भी कर ले, दीवार फिर सीधी नहीं होती है। इसलिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, जिनमें नेहरू जी तो शामिल थे ही, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जो कंट्रीब्यूशन दिया वो अभूतपूर्व था। आप सबको पता होगा कि चंद्रयान पहला, जब चाइना ने अपनी एक स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च की, तब अटल बिहारी जी ने इसरो के साइंटिस्ट को यह कहा था कि भाई इसका कुछ करो, हमें भी कुछ इस पे अच्छा करना है। तब जाकर चंद्रयान प्रथम की परिकल्पना की गई। चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय और फिर जाकर चंद्रयान तृतीय की उत्पत्ति हुई और उस पर सफलता मिली। कहने का यह मतलब है कि एक इस पूरे देश की कलेक्टिव लीडरशिप ने एकजुटता दिखाई और स्पष्टता दिखाई कि हमें इस दिशा में अग्रसर रहना है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी देश आप देख ले जो विकसित है, ऐसा क्या कारण है कि देश विकसित है और ऐसा क्या कारण है कि कुछ देश अविकसित है या विकासशील है? उसका प्रमुख कारण यही है कि जिन जिन देशों में राजनीति देश के मुद्दों पर नहीं खेली जाती है, वही देश आगे बढ़ता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो आते रहेंगे, आज एक पॉलिटिकल पार्टी, कल दूसरी आएगी, कल तीसरी आएगी, फिर कल चौथी आएगी। प्रश्न यह है कि देश से संबंधित मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। जो भी देश आज विकसित है वो ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करते। जैसे मुझे प्रसन्नता है कि इस मुद्दे पर स्पेस टेक्नोलॉजी में सभी राजनीतिक दलों ने आज तक भी, प्रधानमंत्री ने जो कहा, सभी ने अपनी एकजुटता दिखाई है। इसलिए अगर विकसित देश बनना है तो नारे देने से काम नहीं होगा, सिर्फ स्लोगनियरिंग करने से काम नहीं होगा। विकसित अगर बनना है तो उसके लिए उस तरीके की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हम जब भी बात करते हैं ऊपर ऊपर की बात करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? जब तक आप आधारभूत चीजों पर डेलिब्रेट नहीं करेंगे, व्यवस्था नहीं बनाएंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ सकती है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, डीआरडीओ है, आईआईटीज है, आईआईएम्स है, बहुत सारे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे हमारे देश में, मुझे लगता है सबसे ज्यादा सरकारी रिसर्च वाले इंस्टीट्यूशंस है। ऐसा क्या कारण हुआ कि इसरो विकसित हो गया और बाकी के इंस्टीट्यूट, भाई पॉलिटिकल लीडरशिप तो उस समय भी थे, सबके लिए समान थे, फिर इसरो ही विकसित हुआ और बाकी के इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं हुए? उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि साइंटिफिक इंपॉर्टेंट होता है। इसरो के लिए, इसरो को जो लीडर मिले विक्रम साराभाई के रूप में और होमी भाभा के रूप में, उनके साइंटिफिक लीडरशिप ने भी जो नींव का पत्थर रखा, उसके कारण इसरो आज यहां तक पहुंची। आप एक चीज और देखिए, वर्क कल्चर किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर उस इंस्टीट्यूशन का वर्क कल्चर सही है तभी इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ेगा। अगर वर्क कल्चर खराब हो गया तो चाहे आप चले जाओ, मैं चले जाऊं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चला जाए, ना उसको इधर कर सकता है ना उसको उधर कर सकता है। वर्क कल्चर को ठीक करना पड़ेगा। तो वर्क कल्चर में ऐसा क्या हुआ इसरो में? इसरो में जहां तक मेरी थोड़ी समझ है, मेरे कई सारे मित्र भी वहां पे काम करते हैं, वहां पर डिलीवरी बेस्ड टारगेट्स होते हैं, डिलीवरी बेस्ड टारगेट होते हैं। वहां पर मेरिटोक्रेसी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। भाई आप साइंटिस्टों की जब भर्ती करते हो, साइंटिस्टों को लेते हो, तो जिस तरीके से आप उनकी भर्ती करते हो, जो मानसिकता है वो आधार बनाती है। तो इसरो की जो वर्क कल्चर है वो बहुत सर्वोत्तम है हमारे देश में। अब प्रश्न ये उठता है, ये तो जान गए कि इसरो का ठीक है, लेकिन क्या उस वर्क कल्चर को दूसरी संस्थाओं में लाने का हमने प्रयास किया है?
क्या हमने कभी ऐसी कमेटी बनाई है कि हम बाकी के दूसरी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो क्यों फेल हो रही है? मैं फेल हो रही है नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर आप उम्मीद से कम परफॉर्म करते हो तो हमें उसको फेल मानना पड़ेगा। क्या आपने ये सोचा है कि हमारे देश में कितने सरकारी रिसर्च के इंस्टीट्यूशन है, उसको कितनी फंडिंग जाती है, और फंडिंग के हिसाब से कितने साइंटिस्ट है, क्या आउटपुट है? बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पे आउटपुट बिल्कुल जीरो है, फिर भी वो चले जा रहा है। सरकारी, हमारे गांव में ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरी बहुत अच्छी होती है। आप पूछोगे कि भाई सरकारी नौकरी में क्या है, तो वो कहते जी वहां काम करना नहीं पड़ता है। मैं गलत कह रहा हूं, हो सकता है मैं कई लोगों से, आप मेरे से असहमत हो, लेकिन सरकारी संस्थाओं की यह परिस्थिति हो गई है कि उसको अब ऐसा जगह माना जाता है कि वहां पे काम करना नहीं पड़ेगा। अगर सारे इंस्टीट्यूशन के वर्क कल्चर को ठीक नहीं किया गया समय रहते, तो यह मानना कि भारत विकसित होगा वो एक दिवा स्वप्न होगी। और सिर्फ भाषण से, सिर्फ किसी के भी, मेरे से भी, मैं राजनीतिक दलगत में उतरकर इस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को विशिएट नहीं करना चाहता हूं। आप वर्क कल्चर को ठीक करना पड़ेगा और इसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं आईआईटी में, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, एमआईटी में पढ़ने के बाद मैं आईआईटी में प्रोफेसर था, मैं भी साइंटिस्ट था। साइंटिफिक जो फंडिंग है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं मान सकता हूं कई सारी परिस्थितियां होंगी अलग अलग, वही तो लीडरशिप का परिचायक होता है। जब आपको कष्ट होता है, जब आपके पास कम पैसे होते हैं, तो कम पैसों में आप किसको कितना फंड करते हो और आपकी प्रायोरिटी क्या है, वही दर्शाता है कि लीडरशिप क्या है। जब आपके पास पूरे पैसे हैं, पर्याप्त पैसे हैं, तो सबको बराबर बांटना ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न यही उठता है कि हम साइंटिफिक फंडिंग्स को धीरे 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 क्यों काटते जा रहे हैं? हमें बैठना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा और इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठाना पड़ेगा कि कोई भी सरकार आए, कोई भी पार्टी आए, इन सब पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम बार बार ये कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं भी था विदेशों में 9.5 साल, 10 साल तक मैं बाहर था। मेरे मस्तिष्क में ये क्लियर था कि मुझे भारत में आना है और जो मर्जी हो जाए मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। लेकिन मेरे से भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, वो विदेशों में रुके। उनमें से कई वापस आए, कई वापस आके चले गए। चेयरमैन सर वापस आके चले गए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब आप विदेश से अच्छी पढ़ाई करके साइंटिस्ट बन के यहां आते हो, साइंटिस्ट बनने के बाद आप क्या चाहोगे? भाई उसे लेबोरेटरी चाहिए। बिना लेबोरेटरी के साइंटिस्ट वैसे ही होता है जैसे बिना पानी के मछली और बिना भाषण का नेता। साइंटिस्ट को आप 2-2, 3-3 साल बिना लेबोरेटरी के अगर आप छोड़ दिए, तो साइंटिस्ट 2 साल में उसके काम करने की चेष्टा, उसकी सारा साइंस सब धरा का धरा रह जाता है। फिर 2 साल के बाद वो एक सरकारी नौकर बन जाता है। 2 साल बाद सिर्फ उसकी ये टेंशन रहती है कि मेरे को नौकरी कैसे बचानी है, प्रमोशन कैसे मेरा हो जाए, जैसे तैसे जुगाड़ तुगाड़ करके काम कर लो, काम करके भाई प्रमोशन हो जाए, तनख्वाह तो फिक्स है। मैं किसी के विरुद्ध नहीं कह रहा हूं, मैं वर्क कल्चर की बात कर रहा हूं। तो एक तो कोई वैज्ञानिकों के लिए आपको बेसिक मूलभूत जो सुविधा है वो करानी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करा पाते, अगर हम ये नहीं करा पाते हैं, तो ये सोचना कि देश विकसित होगा, ये दिवा स्वप्न होगा। हम वहीं के वहीं बैठे रहेंगे और ताली बजाते रहेंगे। एक और चीज है मेरिटोक्रेसी। मुझे यह लगता है कि साइंस, विज्ञान, साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट, इनको अपने देश में लाना, यहां पे उनको अच्छे तरीके से प्लेस करना, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। अगर हम अच्छे साइंटिस्ट लाकर उनको रिटेन नहीं कर पाए, अच्छे वर्क कल्चर नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है सारी सेलिब्रेशंस बेमानी होगी। हमने एक इसरो तो बना लिया, लेकिन सवाल एक इसरो होने से पर्याप्त नहीं है। हमें अपने देश को अगर विकसित बनाना है, तो सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में वर्क कल्चर को ठीक करना पड़ेगा। और ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। इसके लिए पॉलिटिकल, हर चीज में हमें लगता है कि यार इस पे पॉलिटिक्स मत लाओ, इस पे पॉलिटिक्स मत लाओ, लेकिन अगर पॉलिटिक्स नहीं लाओगे तो कुछ सुधरने वाला नहीं है। इसलिए पॉलिटिक्स लेकर आओ, लेकिन अच्छी पॉलिटिक्स लेकर आओ। अच्छी पॉलिटिक्स लेकर आना है, हम सबको लेकर आना है, अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाना है। एक बार फिर मैं बधाई देता हूं इसरो के साइंटिस्ट को और देश के उन सभी साइंटिस्ट को जो कम सुविधा के बावजूद इतना प्रयास कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे चीजों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में ऐसे काम करें जो भारत को, भारत माता को विकसित और सर्वोच्च बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity. I have been keenly listening to all these speakers, Mr. Jairam Ramesh, Mr. Prasad, Mr. Sandeep Pathak, and Shivaji. Mr. Jairam Ramesh is quite well versed with the subject. We respect him for his studiousness. He has tried to also place some of the facts before the House, and in between try to also talk politics and science, which I shall respond in the course of few minutes, not in very big philosophical platitudes as he did, but in statistical data. Because as students of science, we are taught to speak with facts, figures, and evidence. But before I do that and leave some thought for him to go home and ponder about, I seek your kind indulgence. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के मर्यादा के अनुकूल आपकी यदि अनुमति हो तो गैलरी में बैठे एक हमारे सज्जन हैं, वो अगर खड़े होकर के अपना चेहरा दिखाएंगे सदस्यों को तो अच्छा लगेगा. मिस्टर वीरा मुथुवेल, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान, लेडीज एंड जेंटलमैन. You have celebrated Chandrayaan, you have seen Chandrayaan, you have sung Chandrayaan, but this is the culture under the government headed by Prime Minister Modi. With all the patronage and support from all the quarters in the government, this team works in anonymity. And if even there was an iota of politics, it would not have been so. It would have been otherwise. He is not there by virtue of being a member of any family. He is there and he doesn't even boast to be there. And his appointment was made by the present government to oversee Chandrayaan 3, the series of which started with Chandrayaan 1, the clearance of which was given by then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, and the third of series happening under Prime Minister Modi. Now, before I go to the... No, I'll give you full statistics, enough food for thought, but I will not create an unpleasant taste for the House. So let's first celebrate what it is. I think we are first here to celebrate the science and the scientists. If you go back and see the pictures in the archives, Sarabhai carrying launcher vehicle on the bicycle carriage. Who was the Prime Minister at that time? Which was the government at that time? सभापति जी, हमारे वैज्ञानिकों में कोई प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, निष्ठा भी थी, मेहनत करने का जज्बा भी था, आंखों में सपने भी थे, और कुछ ना होते हुए भी कर गुजरने का साहस था. लेकिन अभाव था अनुकूलता का, और वो अभाव अब पूरा हुआ. ये ठीक कहा गया. I don't think we have to repeat it. Everybody is familiar. You don't even need a crorepati question for this. Everybody knows it started in 1962. It began in 1969. You had the ISRO. All that has been given. What is important is that when we started our program in the early and mid 60s, on the one hand, you had Sarabhai, devoid of transport. And on the other hand, you had Soviet Union and United States preparing to land a human being surface of moon. So that was the gap, that was the difference and the distance between the two.
And still, this group of young scientists had that courage. Now, what has happened which has led to this quantum leap? Something might have happened. कोई जादू की छड़ी आ गई. हमारे मित्र कह रहे थे कि वैज्ञानिकों को पैसा नहीं दिया जाता, प्रोत्साहन नहीं दिया जाता. उसकी भी मैं बात करूंगा एक एक करके. शायद कुछ एक हाल ही के दस्तावेजों से वो परिचित नहीं है. कुछ तो ऐसा हुआ होगा that we started meeting success now and not then. 3 generations later. इन्होंने कहा कि this is not a military program. ठीक कहा जयराम जी ने, and he complimented for not making it a military program. The question then is, you had regimented it. It is for the first time that the gates of Sri Harikota have been unlocked in 2020. Who was the Prime Minister that time? I'm not going to say. Because this debate is not around Prime Ministers. Unfortunately, it has been sought to be. No, you made it. You did a Nehru. I don't want to go into Nehru blunders. I'm not going into that at all, because I said, it's all honest. We'll talk in facts, figures, on the basis of evidence. We don't even need to name the Prime Minister. I'm not naming anybody. But this happened only in 2020. At the time of launching of Chandrayaan, Chairman Sir, there were thousand media persons right at the site watching it with their naked eye. Somebody tweeted from that side. I don't know whether it was Jairam ji himself. What is the difference? Kya bada ho gaya? I was that time at that side. The landing had just happened 10 minutes earlier, and the media person confronted me. So what do you say? ये आया उनका, वो भी विद्वान है. वो कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ा जो इतना शोर हो रहा है. I asked him, when did you come here last? He said, sir, first time. I said, that is the difference. No, this will tell you. बात तो आगे चलेगी. तो ये ट्वीट करने का क्या मतलब था? सुनिए बात को. You'll have to. Now the point is, the common man was debarred from even peeping inside the gates. This will address all that is being said. Now they are saying why they were kept away. You had kept the Space Department behind a veil of secrecy. You had regimented it. You had disallowed it to be synergized with all these stakeholders. You had disallowed to the industry to indulge in this. And that is why the progress got halted. It took us 75 years to reach where we have reached. And that has happened after the quantum leap of the last few years. What has happened? Before 2014, there were 4 startups in space. 4. It is embarrassing to say. Between 2020 and today, there are 150 startups. Earlier ones have already turned into entrepreneurs, like Skyroot and others. I'll come to, one of our friends spoke about the science at large, that also I'll come, but let's first celebrate what we are doing. Then it was said, engineering colleges, government engineering colleges, women colleges, this is what Sri Jairam ji was saying. And he was saying, why you celebrate 5 IITs only? Thank God we celebrate. These were created by Nehru. But we have never said that our scientists are only from IITs. Even today, the gentleman I have introduced is not from IIT. None of them. And we have also celebrated women scientists, while Mr. Veera Muthul is the project director, the joint director is Kalpana. And of course, for Aditya, as
T. Shivaji rightly mentioned, Nijar Sharji from Tamil Nadu. Now you have narrated history because you think you are addressing a house which hardly reads science, hardly reads space. So you score 1962, this happened, 1969, Sarabhai died. We know all those details. Sarabhai, I can give you even further details, how he died and what happened. He died from a myocardial infarction. There was a conference, he died, he didn't wake in the morning. Then Satish Dhawan. No, you have spoken. You have spoken. You have spoken. I'm not fielding. What I'm trying to say is, you are trying to narrate a chronology. You are trying to narrate a chronology simply to summarize the facts. I'm coming to that. Never from the seat like this. I didn't interrupt. Please, no. I don't give you floor. No, I'm not don't give yielding you and floor. I didn't. Please take your seat. Please. No. Don't come in defense of Jairam. Jairam is nothing will go on record. Jairam is competent to defend himself. I am narrating And if all. there will be an occasion, I am I'll give narrating both opportunity. what the past governments did as well as this government does. And I'm not naming the prime ministers. Everybody knows Sarabhai passed away, unfortunately, at the prime of his life. Satish Dhawan stepped in. And of course, he had to, for legacy reasons, the headquarters continues to be in Bangalore. Now, who knows Satish Dhawan more? Incidentally, he belonged to Jammu and Kashmir, which many of the friends here may not be aware. Nevertheless, that is besides the point. What I'm trying to say is, need not share these facts just to impose ourselves. Let's actually talk about the facts and figures. Now, when you say what is new, and as it was tweeted, the new is the budget itself. I'm going to come to the funding as a whole, but if you see only the government budget, if you see the space budget alone, there is a 142% increase in the last 9 years. The budget of space in 2013-14 was 5,168 crore and 96 lakh. You can check, verify. The budget in 2023-24 for Department of Space is 12 crore 5,043 crore 91 lakh, nearly 13,000 crore, almost 3 times the increase. Now, for the friends who were generalizing, saying what is the science budget, I can give you individually. Overall, if you see all the science departments, the total budget in 2013-14 was 21,025 crore. This year, it is 57,303 crore and 69 lakh. I'm not going to the other departments of science because, for example, even in atomic energy, somebody was referring to atomic energy. It was 7,561 crore in 2013-14. And it is now up 3 times, 25,078 crore. If you go for science and the Department of Science and Technology, it was 7,000 crore in 2013-14. To be precise, 7,051 crore, 74 lakh. Somebody can take down these figures and verify them. In 2023-24, it is more than twice, 16,361 crore and 41 lakh. Now, what were in funding? Our friend who claimed to be a scientist was bemoaning this. What earlier governments did not do and what this government has done. What he was trying to suggest is that we should make it more liberal for funding. Maybe he has not gone through because that day there was so much of debt. Unfortunately, discussion could not happen when I brought in the National Research Foundation bill over here, the Anusandhan bill. I wish you were there, we could deliberate on that. They were not interested. That has precisely addressed what Honorable Member Mr. Pathak was mentioning, which could not be addressed by the earlier government successively in 75 years, has been addressed now. I'm not going to name who's the Prime Minister. Anusandhan National Research Foundation, NV Science
almost 80% of funding from non-government sources. It was important for India, ladies and gentlemen, honorable member, honorable chairman, sir, because if we have to grow globally, we have to live up to global parameters. We have to be ready for global challenges, and we have to beat them in the global strategies. America already had a foundation. I'm sure he must be aware, claiming that he is scientist from abroad. The National Research Society. Some of the European countries had, like Germany. Why didn't we have? Why did we have to wait 14 prime ministers? Why we waited for 14 prime ministers? Who will answer this? And this is all based on facts and figures. You can check it. Today, we have National Research Foundation in the form of... We'll resume at 2 p.m. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. कि ये स्त्री की पूजा होती है यहाँ, जहाँ देवी देवता वास करते हैं, जहाँ स्त्री के पूजा नहीं होती वहाँ नहीं होता, वहाँ किए गए अच्छे कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। महोदय, ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है और सरकार के बिल के माध्यम से साबित कर दिया है कि संविधान में समान लिंग भेद से वंचित नहीं किया जा सकता है। जहां महिलाओं देवी देवता के रूप में लोग पूजते हैं, काली दुर्गा के रूप में पूजते हैं, वही महिलाओं का सम्मान होता है। आज हमारे जो मोदी जी है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के महिला के लिए
जो काम किए हैं, सोचे हैं। 27 साल से बिल पड़ा हुआ, अंदर में लटका हुआ बिल जो पटल पर खाया है, आज पास होने वाला है। मैं इस बिल को अपने पार्टी के तरफ से समर्थन करती हूं और एनडीए के तरफ से भी समर्थन करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Giving me to speak. Thank you, sir, for speaking. You're giving me this opportunity to speak on the Constitution 120 Amendment Bill 23. Sir, I stand on behalf of the party in full support of this bill. But there are a few points that I would like to raise as seek clarification from the government. First of all, today when we read the newspaper, sir, this morning, there were two major points which were covered in every newspaper today. I don't want to go away from the spirit of the bill, but I would like to put a few things which are really critical in the nation today. Every newspaper today has complimented all the governments who have brought this bill at various times. But there is another small piece of information on every front page of the newspaper today, which is about the incidents that happened in Canada. So I think since this is a special session and it's only for 5 days, I request the government to debate a few topics which are equally relevant as today's. One is the Canadian issue. Yes. The second is Maharashtra today, the state which I come from, sir. Waha Maratha Arakshan, Dhangar Arakshan, और मुस्लिम आरक्षण, ये चारों आरक्षण जैसे आरक्षण का मामला बहुत ही अच्छा है, मैं तहे दिल से उसका स्वागत करती हूँ. उसी तरह come to the bill, please. Yeah, I'm just making up. This is just an introduction about आरक्षण. This I'm not asking. For this चल रहा है, तो उसके लिए भी अगर if the government is open, we are very happy to debate it. The other problem is even about onions, inflation, drought, बहुत सारे important issues है. तो अगले 2 दिन में अगर ये ले ले तो हम सब सरकार का साथ देंगे. Sir, the Honorable Amit Shah ji, when he corrected one of his speakers, he was very graceful and he said, why can't men? भाई भी कर सकता है. जी हाँ, सही बात है. हर घर में ऐसे भाई नहीं होते जो बहन का सब अच्छा कल्याण देखते हैं. But that is very kind of him to say that. हर की तकदीर इतनी अच्छी नहीं होती. But फिर भी, the men, I never say, I always say there are 2 wheels for a cycle to work. So men are equally important. And I would like to, about the men which has influenced our lives as women. It was B.R. Ambedkar who gave us a right to vote. It was Mahatma Phule, he made sure gave us education, and a woman like me stands here educated and qualified because of what he contributed. And the women policy, which was first, I say that with extreme pride in my heart, that the women policy which was started by Shri, initiated in the Congress under the leadership of Shri Rajiv Gandhi. I was fortunate enough to say it's my father Sharad Pawar who in Maharashtra was the first state to implement Panchayat Raj 33% reservation. And it's about the girl child. I mean, Sunita Dugalji was talking about the issues that women have. Fortunately, I was born in a very liberal home. My father and my mother, there was only one condition my father laid to my mother, that if we have a child, whatever the gender, it can be any gender, a girl or a boy, but we are not going to have more than one child. And I was born, and my father after that did the family planning, not my mother. So I really say this, it was 50 years ago, 5 decades, when nobody talked about Beti Padhao or Beti Bachao. I come from a family, and same is applicable to my friend Kanimoli. Her mother also chose to have only one child as her parents have had. So we come from these families. You also, Raja ji also has only one child, one daughter. So we are very lucky you also have one daughter. This is a great house where we are blessed that with decades we are genuinely liberal. We are not looking for one. There are many families which come from this kind of liberal modern thinking where we are not trapped into genders. Sir, this is a big social change that we came in. I would like to bring few points to notice which I think Nishikant Dubey ji, the lead speaker, I mean, I don't get into the gender, so I'm not affected whether he led the debate from BJP or he did. But I want to ask some clarifications to BJP. I felt, these were my emotions, that BJP was taking anticipatory bail by making him lead from the front this time in the debate. The reason of the anticipatory bail was he was asking us all the questions which we have raised or which have come in newspapers or what people have said yesterday. He yesterday said, he said that, oh, ये तो ST, SC, OBC का अभी मांग करेंगे. क्यों नहीं मांग करेंगे?
सरकार से हम लोग ऑपोजिशन मांग नहीं करेगी तो कौन करेगा? एंड व्हाई नॉट? दिस इज अ ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑन 3 not SC OBC. Let's make a constitutional amendment. It's a special session. Let's send a message to this nation that we are committed to ST, SC and OBC. What is wrong with that? And if they have a different view, BJP must clarify that stand. Another point, sir, which is very concerning with what he said was, he said that Geeta Mukherjee, Sushma Swaraj. He's absolutely right. I have high regard for Sushma ji in my heart. But what he mentioned, another person was Brinda Karaji. Aapko yaad hoga, 2010 mein Brinda Karaji also contributed substantially. There are a lot of women who did exceptionally well for bringing in this bill. No, I'm not yielding. Please. The whole history is that Pramila Dandaute from Rajya Sabha mein aati hu. Pramila Dandaute in 1996 got the first private members bill, and women like Mrunal Gore, Ahilya Rangnekar, Geeta Mukherjee, Margaret contribute to making sure this bill came into light, sir. I have a few questions to ask. Two questions I have to ask. Very short, sir. I will ask the government. So I'm concluding, sir. Just started. Yeah, and that too is our bill. Please don't sir, make I have such a question to ask him, Nishikantji, for one more. He said that we are on a side, India is on a side of people who ran women down and spoke derogatorily. I would like to ask the BJP, and this is my own case. This is not somebody else's case I'm fighting for. The BJP had a head who was the head of the BJP. He told me personally, जाओ खाना बनाओ, देश कोई और चला लेगा, हम लोग चलाएंगे. This is what the BJP's mindset is. Another minister in their cabinet has used a derogatory word against me. So BJP जवाब दो, जब हमारा कुछ कह रहा है तो इंडिया खराब है. आपके मंत्री पर्सनल कमेंट्स करते हैं पर्सनली on elected women member. I didn't even react. It was not even worth reacting. So I did not say or raise it. But since he brought it up, I just wanted to square it. कि आप करें तो ठीक और हम करें तो गलती. That way, the rule has to be the same for everybody. Another question I want to ask, just out of curiosity, I appreciate their entire speech and the question. Unless we have a delimitation and census, we are not going to get it, is what I've understood from them. Yes. So then what is this special session? तो अभी नहीं करते तो दिसंबर में कर लेते. We could have had other discussion. There's drought in this country. Why this special session cannot discuss drought? We could have done hoodwinking. So my question to this government is the date of the next census is indeterminate. The date of the next delimitation is indeterminate. So in the reservation, which is dependent on 2 indeterminate dates, how are we going to get it? There is no dates only decided for census or for delimitation. So what is the date and the timeline for this? So I can't understand what this is. I'd like to quote the Mahatma Gandhi in this. When the Cripps mission, sir, if you remember, you're a learned member, he had mentioned when the Cripps had happened that post-dated check drawn from a crashing bank. That's what I felt when I saw this. Thank you. This is a post-dated check given by them. Thank you very much. And Megwal ji made I think last this 2 comments. Last very short points, very short points, sir. That the Megwal ji said that Lok Sabha mein aayega, Rajya Sabha mein nahi aayega. Lekin he said states mein aayega MLC. That's 303. They're 303 here and they're 200 in my state. जोड़ तोड़ के हर राज्य में उनकी सरकार है अब. So why don't they do that? If we failed, I accept we failed. So then what is the difference between you and us then? So if they want to be the change, what they say, so they should apply it in Rajya Sabha. We will support it. I'm sure the entire India. Thank you. We will support Srimati. it. Sir, the only last very short point, I would like to quote the Jawaharlal Nehru Panditji, the first Prime Minister. You can tell the condition of the nation by looking at the status of the women in the state, sir. So even today, the record of Maharashtra, and my friend Kakoli Ghosh talked about the state and the crime against women. I very humbly would like to tell them that what you're doing in decision-making as power, we welcome it wholeheartedly, but this voice must say that crime against women has to stop. And together, today's Maharashtra data says, and they have a home minister there in Maharashtra, where it has gone up exponentially high. So the way we are looking at decision making
power to women. We must even talk about crime against women, and the whole of Parliament must condemn it and make sure it comes down to zero. I wholeheartedly congratulate धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे एक अवसर दी विधेयक पे बोलने के लिए। नारी शक्ति वंदन विधेयक समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से यह बिल अटका और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार, और इस 1 दशक होने जा रहा की याद सब कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ सर सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सब, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाए। सर, जहां हम कर रहे हैं आज महिला विधेयक बिल की, तो विदाउट रेवोल्यूशन एवोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, एंड फॉर revolution to take place in our country, it is very important that the OBC women get their reservation, that the SC/ST women get their reservation, and that the minorities women also get this reservation, sir. और सर, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर कि समाजवादी पार्टी की जो यह मांग है वो इस पे श्रवण भी करेंगी, मनन भी करेंगी, और इसका निधि ध्यासन भी करेंगी। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पिछड़ा वर्ग महिलाओं जो बहुत पिछड़ी हैं, जिनकी आप समझ नहीं सकते कितनी वो पिछड़ेपन से गुजर रही हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा था वो महिलाओं का दर्द समझते हैं, तो उनको पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। सर, मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वो किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना लें, और आने वाली कार्यवाहियों में भी ना लें। सर, इन्हीं शब्दों के साथ सर समाजवादी पार्टी की मांग को मैं दोहराते हुए कि पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं और SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती जनको मीना जी, श्रीमती जनको मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। आज मैं अति महत्वपूर्ण बिल जो नई संसद में पहला बिल पेश हुआ, महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023, हृदय से पूरे देश की माता बहनों और नारी शक्ति की तरफ से मैं धन्यवाद देती हूं और वंदन करती हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए आज ये भावना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हृदय में उत्पन्न हुई, और उन्होंने उनके द्वारा निरंतर चलने का जो प्रयास उनका है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से बाबा साहब चाहते थे कि मिटे विषम समरसता लय हो, भेदभाव के नए क्षितिज पर नया भाव को
इस विषमता भाई को पाटने के लिए, जब एक कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक रथ के दो पहिए हैं, एक को साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी गति को ध्यान में रखते हुए मैं याद करना चाहूंगी माननीय सुषमा स्वराज जी, जो अब नहीं है, जिन्होंने को जब किया मैं साक्षी थी उस समय, जो अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता बोल कर उनकी हाथ से लेकर उन गया था बिल्कुल। कई भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को दोहराया, लेकिन माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कुछ बात कहना चाहूंगी। जिस तरह से भाई निशिकांत जी जब बोल रहे थे तो उस समय एक प्रश्न उठाया कि ये कि जब इतना साकार की, और उस साकार करने के साथ मैं याद दिलाना चाहूंगी उनको कि भाई की कलाई पे जब राखी बांधी जाती है तो केवल वो राखी रक्षा की नहीं, बल्कि वो की रक्षा और अपने भाई की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी की सक्षमता पर हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, नारी सक्षम है। इसके अनेक उदाहरण आज हमारी वर्तमान लोकसभा में, चाहे रक्षा मंत्रालय संभालना हो, चाहे वित्त मंत्रालय संभालना हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संभालना हो, सक्षम नारियां, सक्षम महिलाएं सक्षम वर्चस्व को और भारत की परंपराओं को समझती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बिल में जिस तरह से ये सभी जो ये तीनों जगह लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के कुछ स्थानों के यथासाध्य 1/3 बहनों को आरक्षण देने का जो प्रावधान इस बिल में किया गया है वो वाकई में प्रशंसनीय है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये भी निवेदन होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान ने जो सुरक्षा दी है, सुरक्षा बदस्तूर बनी रहे। अनुसूचित जनजाति की मैं स्वयं हूं और मैं ये कहना चाहूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति और जनजाति को केवल वोट बैंक नहीं समझा। जब 13वीं लोकसभा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्रालय का दायित्व भी मुझे दिया, उस समय भी मुझे ये अनुभव था कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सर्वोच्च उन्नति और सम्मान के प्रति काफी चिंतित। उस चिंता को आज हमारे बंगाल से, और वो बोल रही थी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपके राज्य ने हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू ही नहीं किया, दिल्ली ने लागू ही नहीं किया, उड़ीसा ने लागू ही नहीं किया, और भारत सरकार की महिला समृद्धि योजनाओं लागू करने में इतने वो पीछे क्यों हैं? यदि वो महिलाओं की प्रगति को देखा तो उस प्रगति में महिलाओं से समर्थ भारत सरकार की योजनाओं को स्तर से लागू करना चाहिए था। मैं एक बात और आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहूंगी कि 70-75 वर्ष में 65 उस पार्टी ने ये की उन्नति के लिए कोई कल्पना करे, और उस समय जब ये बात चल रही थी तो दिनकर जी ने भी ये बात लिखी थी कि अटका कहाँ स्वराज्य बोल दिल्ली तू क्या कहती है, अटका कहाँ स्वराज्य बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। और यही नहीं सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विवाह बंधनी हुई बता किस घर में। एक ही घर में वो विवाह बंधनी हो गई, और विवाह बंधनी होने से, वो आभा बंधनी होने से भारत का समुचित विकास, भारत की नारी शक्ति की उपेक्षा जिस तरह से की गई,
और जिस तरह से उसे कमजोर समझा। धन्यवाद। लेकिन गीतों में भी गाया है कि कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, वो सत्य का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली मौत भी उससे हारी है। मैं ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि महिलाओं के क्षेत्र में थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से वर्तमान लोकसभा में सक्षमता का परिचय दे रही है, और जब ये आरक्षण लागू होगा तो हमारे वर्ग की, हमारी अनुसूचित जाति, हमारी जनजाति की बहनें आज भी जिस सक्षमता से खड़ी हैं और भी अधिक सक्षमता से खड़ी होंगी। अवसर मिलेगा, अवसर मिलेगा तो निस्संदेह प्रगति होगी, महिला शक्ति उन्नत होगी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो घर बार संभालती है, जो संतान को जन्म देती है और जो संतान का परवरिश करती है, सेवा शुश्रूषा करती है, वो देश और राष्ट्र की सेवा में भी पीछे रहने वाली नहीं है। मैं आज हम 82 बहनें, आज हम 82 बहनें संसद में हैं और 82 के 82 बहनें सक्षमता से में भागीदार बनती हैं। हम उस भवन में थे, उस भवन में जब बैठे थे तो हम केवल गिनते थे इशारों से कि इतनी बहनें बैठी हैं। और जब अब नई संसद में ये उद्घोष हो चुका है और ये आज इस पर चर्चा रही है, मुझे लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया को करते हुए लागू होगा तो आज इस संसद के अंदर 181 बहनें बैठेंगी, 181। और 181 बहनों का जो नेतृत्व इस देश की महिला शक्ति को मिलेगा, उनकी सक्षमता को मिलेगा, उनके शिक्षा स्वास्थ्य की उन्नति के लिए मिलेगा और इस राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनकर धन्यवाद मैम, धन्यवाद। लगाएंगे। आप समाप्त कीजिए। एक ही बात कहना चाहूंगी अंत में, आप समाप्त कीजिए। एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ तो दूर उड़कर हमारी 60 साल की सरकार को देख, कुछ तो दूर देख है कितना विस्तार का एक कुछ ही दानों पे करते क्यों जीवन का, ये मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी जी। Sir, it is not that every day that we create history. This is indeed a historic moment that in the new parliament building, the first legislation that has come before the house is much awaited women reservation bill. But if this is history, our Honorable Chief Minister of Odisha and Biju Janata Dal Supremo, Sri Naveen Patnaik is the historian. The bill has seen the light of day only after the initiative of Sri Naveen Patnaik ji. Our Honorable Chief Minister has always wanted and worked for women reservation. In November 2018, Honorable Chief Minister of Odisha Assembly has adopted a resolution proposing 33% of reservation for women in Parliament and in the assemblies. Pursuing further, in the same year, he had written to 22 chief ministers for their support on this issue. Then he had also written to Honorable Prime Minister on this issue. He strongly believes that our society and our country will move forward with much better moment. Half of our population, our mothers and daughters, have a role in the highest decision bodies. We are the first political party to field 1/3 women candidates in 2019 Lok Sabha election. Every third BJD MP in this house is a woman. We are promoting political representation of honorable member of this house is an example how Mission Shakti is helping women to rise through ranks to this sacred sanctum. Odisha has reserved 50% of seats for women in panchayats and urban local bodies. In the last local body election, 55% of those who have won are women. Sir, in local bodies, we are pioneers in giving 50% reservation to women. From Malkangiri to Sundargarh and from Baripada to Puri, you will see the thousands and thousands of women leaders at the local level, leading women empowerment politically, economically, and socially. This bold, aspirational, and new Odisha has voices which must be heard across panchayats, legislative assemblies, and parliament. Sir, my leadership believes that along with the political empowerment, we must have an action plan for social and economic empowerment. Historic initiatives like Mission Shakti, Biju Swasthya Kalyana Yojana, Mamta Yojana, loans to tribal girls,
etc. have transformed the lives of several girls and women. Odisha's models of empowering women through self-help groups has been widely appreciated. In order to bolster potential women entrepreneurs, Odisha government launched the Startup Odisha initiative. This is to ensure that at least 33% of new startups have women as founders and co-founders. Sir, we appreciate Honorable Prime Minister and the Union government for bringing this bill. However, we should suggest that the bill should be implemented from the coming 2024 election instead of waiting for the delimitation. Bill लागू ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଆଉ 6 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? Sir, this agenda perhaps is for 2029. We will have such be followed by delimitation exercise, which itself a humongous task, and then only the act will come into force. Sir, Odia re gote kotha achi, 60 mohono ghio hobo na radha nachibo. Sir, we waited for 75 years and this bill has come just to tell us that please wait for another 6 years. Sir, this is not done, sir. Let's not make a joke, a political gimmick. Women empowerment is not a joke. BJD has taken a stand to give 33% of tickets in Lok Sabha to women from 2019 onwards, and will continue to do so till it becomes the act. But we demand that this historic legislation from next election without any further delay. Historically, we have 75 महिला मान को लोकसभा रे 33% टिकेट दबा पई बीजेडी एक दृढ़ पदक्षेप नेछि एवं ए एक्ट हेबा पर्यंत यह जारी रखिबो किंतु आमे दाबी करछु जे एई ऐतिहासिक कानून नियम आगामी निर्वाचन ठारू अधिक विलंब न करी कार्यकारी हेबा उचित गत 75 वर्ष मध्य रे हम महिला मान प्रति करितबा ऐतिहासिक भूल को यह संशोधन करिबो सेकेंडली आई अप्रिशिएट दैट this bill has provision for SC and ST women within the reservation. But this bill has ignored the OBCs. How can you ignore the interest of 42% of our population? Odisha government has initiated OBC census and it is committed to take all sorts of measures for their empowerment and development. Sir, the government should take necessary steps for the interest of the in this bill. This will help the bill to become. Sir, beyond the provisions of the bill, we need to create an ecosystem for political, economic, and social empowerment of women, political parties, society. Everybody have a stake to ensure that a safe ecosystem is in place for women. Look at the situation how women who are in public life are trolled online mercilessly. We need to do something in that direction also. Legislative provisions with a safe and sustainable political and social ecosystem will definitely go a long way. I thank Honorable Chief Minister Sinha for his leadership and consistent efforts for the cause of women. With these words, I conclude, and with the great hope that my suggestion would be given due consideration. Thank you, sir. Jai Jagannath. Thank you very much. Next, Srimati Gomati. Yes. जय जोहार, जय भारत। माननीय सभापति महोदय जी, मुझे हार्दिक खुशी हो रही है कि मैं महिला आरक्षण बिल पर अपना पक्ष रख पा रही हूँ। माननीय महोदय जी, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार नित नए आयाम गढ़ रही है। ये इन्हीं कार्य प्रणाली का परिणाम के सदन में महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत हो सका है। आदरणीय महोदय जी के सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नारे को सार्थक सिद्ध करते हुए देश की आधी आबादी को उसका पूरा हक देने का पहल की है। आप लोगों ने कभी सोचा कि देश की आबादी का आधा हिस्सा होने के बाद भी महिलाओं को विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा में जो हक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। इसका कारण ये विपक्षी दल रहे हैं। कभी भी महिलाओं के हित में ये लोग हमेशा पहला हक जो किसान विरोधी, गरीब विरोधी रहे हैं। महिलाओं के पक्षधर होने का नाटक बखूबी आज रीमा मई
अवसर पर मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही बधाई भी देती हूं। पिछले कई दशकों से आधी आबादी को उसका हक दिलाने के पूर्व की सरकारें सफल नहीं रही। उस नारी शक्ति के हर सपने को आपने इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कराया। मैं एक गरीब परिवार, आदिवासी परिवार की बेटी, जिसको लोग के इस पवित्र मंदिर में पहुंचाने का अवसर मिला है और आधी आबादी को उसका हक, पूरा हक मिलने के इस पावन अवसर का गवाह बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बारंबार आभार प्रकट करती हूं। महोदय जी, मैं एक आपको बताना चाहती हूं, श्लोक का या देवेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। हम लोग इसको केवल कागज में रह गए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया है सका। महोदय जी, मैं अंत में कुछ कहना चाहती हूँ। पुरुष प्रधान समाज रहा, रूढ़ियों के अनुरूप परिवर्तन नियम जीवन का बदल रहा हर रूप। जो सदियों से सहती आई लोक शर्म और लाज, साहस आज में हाथों में जा आज उड़ान रही है। ये देखो सपनों को साकार, धीरे धीरे रूप को आपने देर ही वो आकार, वर्षों से जिस हक की थी हमें हकदार। धन्यवाद। उस सपनों को पंख लगा रही हमारी मोदी सरकार। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। श्रीमती टी सुमति जी। Honorable Speaker, sir, I thank you profusely for having given me this opportunity to speak on this historic Women Reservation Bill 2023. Sir, as our party DMK and our dynamic leader, our Chief Minister M.K. Stalin, Talapati, have much bearers of women empowerment, I rise here to support the bill. While I appreciate the initiative, I do have my own fears, anxieties and doubts. Sir, I opened up to read the bill with huge expectations that it will lead women to enter into so far have not experienced and into uncharted territories. But again, I ended up with huge disappointment. It is like a post-dated check in a bankrupt bank. And it's like a betrothal with so many ifs and buts, and we are not sure when it is going to culminate in an utopian marriage, sir. Sir, this bill, Women's Reservation Bill, is a matter of right, not humanity and dignity. To the right, sir. Well, we, the DMK party, welcome the bill and support the bill. I would like to also remind you that, sir, only not in this millennial era, women are empowered. Back in Sangam era, 3,500 years ago, in our Tamil soil, we have seen empowered women. Our celebrated poetess Avayar, for example, wrote Mudurai, a manual for wise living for all of them. And our rich Tamil epics, Manimegalai and Silapadigaram, have spoken about the rights and the power of women invariably throughout all walks of life. Sir, Tamil Nadu is a role model state. And this bill has been perpetuated and had been put forth by so many male political parties, but the seed is sown in the soil of Tamil Nadu by the Dravidian movement. And it has been nurtured, the manure had been nurtured by the Dravidian trio, Tandai Periyar, great programs, the Dravidian model, all the schemes and reservations were entirely given to the women folk. For example, equal rights for women, family and family properties, 1989, 50% reservation in local body representations. The present government has implemented 40% reservation for women in government jobs, fare free travel for women in government run city buses. And the icing on the cake is the recent Kalanger Magalir Urimai Togai, providing ₹1,000 for 1,650,000 eligible women, sir. First time in the history of India, first time in the history of the world.
And to quote our Chief Minister, he has stated that an empowered woman plays a stellar role in nation's growth, people's wealth, and in this Tamil Nadu stands second to none. And while so many of the have been profusely here admired women, it was our Bharatiya who said, Atmum madamum naihadku vendumam namakku vendam, meaning that don't attribute timidity and foolishness to women. We want equal rights, and we want the right to keep our heads high and walk in this, wherever it is in this earth, as the human beings with wonderful cherished rights to live in this world. Sir, the history of the bill has been traced here by all the other members who have spoken elaborately. After a tumultuous journey, it's here now today. I thought finally we see the light of the day, but not even the end of the tunnel I'm able to see it, sir, because of the loopholes of the bill. It's being introduced in Hindi, sir, here. While introducing it here, our Honorable Prime Minister and the Union Law Minister call it as Nari Shakti Vandan Adhiniyam. What is this Hindi sizing, sir? Why not in English? When you speak as Nari Shakti, why did our Madam President be not invited for the inauguration of the Parliament, sir? And then again, sir, another thing, no special quota for the physically challenged women for the inclusion of the bill. That's another gray in it. And also, why is there no reservation in Rajya Sabha or State Legislative Council? And again, Section 5 of the bill states that the provisions will come into effect after the delimitation exercise. Sir, this is an utopian promise. Delimitation is scheduled for 2026, and the census, which was for 2021, never took place, because it is now so clear that this is the electoral agenda for the Loon government. Will be very intelligent to decipher what is right and wrong, and they will definitely vote for the India Alliance. Sir, to conclude, I would like to quote Dr. Ambedkar. One moment, sir. On 4th November 1948, Dr. Ambedkar, having introduced a draft report Constituent Assembly with modification, stated that this constitution, it is workable, it is flexible, and it is strong enough to hold the country together both in peace time and in war. Indeed, if I may say so, if things go wrong under the new constitution, the reason will not be that we had a bad constitution. What will we will have to say is that man was wild. So I would, unquote, so I would, through you, sir, humbly request the lawmakers that whenever they amend our constitution, they should remember this statement of our dear Dr. Ambedkar, that it should reap the fruits quickly so as to be enjoyed. Sir, this bill should be implemented as quick as possible before this commencement of this 24 elections. If implemented soon, it may be a small step for a woman, but a big leap for womankind. Thank you very much, sir. Very good. Thank you very much. Next speaker now, the Honorable Minister, Srimati Anupriya Patel ji, would like to intervene. तो संविधान सदन कहा जाएगा, उसे पीछे छोड़कर नए संसद भवन में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर इस नए संसद भवन में अपनी पहले ही दिन हमने विधायी कार्य की शुरुआत करते हुए नारी शक्ति को सही मायनों में नमन करने का काम किया है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण विधेयक सरकार लेकर आई है, इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करती हूं, और ये सही मायनों में हम सब के लिए Please let the house be in order, please. Please. सभापति महोदय, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और 142 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ की आबादी महिलाओं की। लेकिन चिंतन को दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारे लोगों में
जो महिलाओं की भागीदारी है वो महज 14% है और राज्यसभा में केवल 11% है। इंटर यूनियन की एक रिसर्च हुई जिसमें निचले सदन में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा देखा गया 193 देशों में, जिसमें भारत की रैंकिंग 149 है। जो भारत की रैंकिंग है वो 135वीं है। ये कोई बहुत एनकरेजिंग आंकड़ा नहीं है हमारे लिए। और सरकार के तमाम आर्थिक सर्वेक्षण भी बताते हैं कि हमारे राज्य की विधानसभाओं से लेकर हमारे देश की लोकसभा में, देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है और इसलिए महिला आरक्षण विधेयक समय की जरूरत है। और आज ये बड़े दुख की बात है कि छोटे छोटे देश 50% तक महिलाओं की भागीदारी अपने डेमोक्रेसी में सुनिश्चित कर ली है और भारत जो कहता है कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम अपने यहाँ 50% की अभी तक भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। तो उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द की टू सोशल प्रोग्रेस। हमने देखा है कि हमने अर्बन लोकल बॉडीज में, पंचायती राज संस्थाओं में जब अपने देश की महिलाओं को भागीदारी दी तो हमारी महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में कितना उल्लेखनीय कार्य करके दिखाया है। और जहां तक मोदी जी की सरकार की बात है तो हमारी सरकार विमेन लेड बात करती है, यानी कि हम है तो जरूरी है कि जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग है हमारे देश के अंदर, हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, इंस्टीट्यूशंस में हमारी महिलाओं को लाना बेहद जरूरी है और उस दृष्टि से ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, ये बिल नया नहीं है, ये बिल पुराना है, इसका इतिहास 27 वर्ष लंबा है। हमने देखा कि 1996 में सबसे पहले एच.डी. देवेगौड़ा जी की सरकार आई थी और उसके बाद तमाम हम पार्टीज ने, सरकारों ने 97, 98, 99, 2003 में वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार ने प्रयास किया, 2008 और 2010 में यूपीए की सरकार ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सरकार इसे एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में सफल नहीं हुई। सभी सरकारों ने विफलता का ही सामने किया। उस दृष्टि से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब इस विधेयक को लेकर आई है तो हम इसे अंजाम पाने का, विपक्ष के साथियों की चर्चाओं को सुना, उसमें कई विषय सामने आए जिसमें था इस बिल के तहत जो हमारे पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं उनके लिए अलग से प्रावधान करने का। अध्यक्ष जी, ये विषय गंभीर है और ये जो चिंता है वो नाजायज भी नहीं है, इस मांग को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि महिलाओं को अगर हम देखें तो महिलाएं एक जैसा ग्रुप नहीं है, एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है। महिलाएं एक हेट्रोजेनस ग्रुप है क्योंकि महिला अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही है, अलग अलग इनकम आती है, शिक्षा का स्तर होता है वो भी अलग अलग होता है। और हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें जो हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाएं हैं निश्चित रूप से वो हाशिए पर हैं और उनके लिए चुनौतियां अलग किस्म की हैं, उनके लिए चुनौतियां अधिक भी हैं और इसलिए उनके लिए ज्यादा संरक्षण की मांग भी समय समय पर होती रहती है। हमारी सरकार के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी के हितों को साधने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले इन 9 वर्षों में हुए हैं और एक सहयोगी दल की नेता होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी जरूर कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे और इसको सुनिश्चित करने के लिए भी कोई काम जरूर करेंगे। जब मैं अपने कांग्रेस के साथियों को सुन रही थी इस विषय को उठाते हुए तो मेरे मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा जागी कि 2008 में आप राज्यसभा के अंदर इस बिल को लेकर आए थे और 2010 में आपने इसको पारित कराया था। आज आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए ये विषय आपके संज्ञान में, आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया नया ख्याल अभी अभी आया है? हालांकि ये विषय महत्वपूर्ण है, मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगी, लेकिन स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि हम अपने आवरण बार बार बदल नहीं
सकते हैं अध्यक्ष महोदय, ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ। मैंने एक और बात देखी है अध्यक्ष, कई साथियों ने बार बार कहा कि चुनाव है 2024 का, 2024 का चुनाव है। सर्वदलीय बैठक में मैं सुन रही थी, कई सारे हमारे साथी महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग कर रहे थे। तो अब मैं देखती हूँ एक अजीब स्थिति है कि अगर सरकार इस बिल को पेश नहीं करती तो आप कहते हैं कि आप तो महिला विरोधी, आप तो महिला की चिंता नहीं करते, आप महिला के प्रतिवादा करते, और जब सरकार बिल ले आई है तो आप कहते हैं कि अभी 2024 के आप चुनाव को देखकर लाए हैं, चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी, हर फैसला संसद में बैठकर किसी चुनाव को देखकर नहीं किया जा सकता। आज हमने एक अच्छी शुरुआत की है, हमने एक अच्छी पहल की है, और इसे अगर हमें अंजाम तक पहुंचाना है तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 2011 के आंकड़े हमारे सामने नहीं है। 2001 में हमारी सेंसस हुई, उसके बाद एक लंबे समय तक हमने सेंसस की एक्सरसाइज नहीं करवा पाई है, बीच में कोविड की भी बाधाएं रही। तो हमारे पास जो जनगणना के आंकड़े हैं वो बेहद पुराने हैं, और उसके आधार पे हम डिलिमिटेशन नहीं कर सकते, हम एडिशनल सीट्स जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, और हमें नए सेंसस एक्सरसाइज के साथ डिलिमिटेशन करते हुए एडिशनल सीट्स क्रिएट करनी होंगी, जिसमें हमारी और जो महिलाएं हैं उनको इसमें आने का मौका मिले। और जो आज हम परेशान हैं लोकसभा में 14 की हमारी महिलाओं की है, वो ये आग्रह करूंगी कि मैं देख रही हूँ कि एक जो सेंस ऑफ द हाउस है कि सभी लोगों का एक मूड भी है कि ये बिल पारित हो, तो इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये बिल स्वागत योग्य है, इसको लेकर आपकी कुछ आपत्तियां हो सकती हैं, सरकार उनका ध्यान भी रखेगी, और इसको हम खुले दिल से स्वीकार करते हुए बिना किसी किंतु परंतु के इसको आगे बढ़ाएं। हमारे जो सेंसस को लेकर या डिलिमिटेशन को लेकर आपकी है उसके आप दीजिए, कर लेगी। आपने मुझे समय दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और इस बिल को लाने के लिए पुनः मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे सरकार के मुखिया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर हसरैन मसूदी जी। शुक्रिया चेयरमैन साहब। जनाब, ख़वातीन के हुकूक और ख़वातीन की सियासी इदारों में भागीदारी ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बाबाई कौम जनाब शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह की सरबराही में जब हम शख्सी राज के खिलाफ जिद्दजहद में मसरूफ़ थे तो 19 को आज़ादी से कोई 3 साल पहले हमने जब जिसमें महाराजा का एक ऑनर्शियल हेड के तहत एक रूल बना रखने का एक एहतमाम था, तो जनाब हमने जो एक मंशूर जारी किया, मैनिफेस्टो जारी किया, जो जम्मू कश्मीर के लिए नया कश्मीर के नाम से मशहूर है 1944 का। उसमें हमने अलग से एक वुमेन चार्टर का हमने उसकी बात की, खातिन के हकूक़ है जो बात की, उस दे हम वादेबंद रहे। तो हमने सियासी इदारों में ख़वातीन की तर्जमानी, उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की। तो जब उसके बाद हमने 1957 में अपना आईन बनाया, जम्मू कश्मीर का जो आईन है उसमें भी डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी, उसमें भी 22 में हमने जम्मू कश्मीर के ख़वातीन के लिए सियासी इदारों में भागीदारी में उनकी रिलेशन की बात की, और इक्वलिटी जो है पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल अफेयर्स में उसकी बात। अगर 5 अगस्त 2019 को गैर आईनी तरीके से जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए गए और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस से महरूम किया गया, लेकिन हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर का जो आईन है 1957 का वो बिल्कुल अभी भी नाजिल अमल है। क्या आपने उसको डिसेबल किया, लेकिन वो जो उसमें जो रोड मैप है उसमें जो कल्पनाएं की गई है वो सारे हदफ मौजूद है। तो ये जम्मू कश्मीर का इसमें रोल है। उसके रेवंत रेड्डी जी, अब जनाब जब हम रेवंत रेड्डी जी, अब हम जनाब जब इस बिल पर हम आते हैं तो ये ऐसे किसी ने कहा है कि मस्तूम महकमे उस गुल की जो किसी बाग में खिला ही नहीं। तो ये जनाब ऐसा एक वादा दे रहे हैं जिसकी कहीं पर कोई नाम निशान नहीं, एक शराब है। क्योंकि जो ताना बाना है बिल का जनाब इसमें दिया गया है, आगे वाले जो हमारे पास स्टेट्स होगा, जो फिगर्स हो गया अगले सेंसस के, उसके बाद
जो डिलिमिटेशन होगी उसके बेस होगा। उसका मतलब है ये मौखर होगा कोई 15 साल। ये जो मकसद है महज और महज मकसद ये है कि सियासी लाभ हासिल करने का। और मुझे यकीन है कि जो देश के अवाम है वो इस फ्रेब को समझते हैं, इस शराब को समझते हैं। वो ये है कि में के लिए 34 तक इसका लाभ जो पार्टिसिपेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, अंडर रिप्रेजेंटेड है खवातीन, तो उसके लिए अगर हम वादेबंद है, अगर इनके खुलूस होता तो वो खुलूस में जनाब तो ये मौखर 15 साल 12 साल के लिए नहीं करते, ये बल्कि आज के दिन ही 2000 जो आगे वाले इलेक्शन है उसमें ये करते, ये उसमें इसकी कोई व्यवस्था करते। अब जनाब जो 2000 अगर हम देखेंगे हिस्ट्री पर, जब जो पहला प्रयास हुआ जनाब 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, उस 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जनाब इनका विरोध रहा है बीजेपी का। जो खवातीन को हुकूक देने का जो अमल था उसका जो शुरुआत की गई थी, तो पहला दशका इन्होंने उस पर दिया। तो अब जो ये दे रहे हैं अभी 10 साल से ये सत्ता में है, तो 10 साल से कोई प्रयास नहीं हुआ, अगरचे 2010 में पहले राज्यसभा में पास हुआ था। तो अब आज ये लाने का मकसद अगर ये है कि नहीं हम फौरन ही खवातीन को जो रिप्रेजेंटेशन उनकी है, अंडर रिप्रेजेंटेड है, उनको वो हक दें, तो क्या मतलब है कि आप इसको मौखर कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं और 15-12 साल 13 साल तक डेफर कर रहे हैं। और फिर भी ये है जनाब ये कि कोई गारंटी नहीं है कि जब उसके बाद कैसे होगा, क्या कैसे शेपअप होगा, जो भी आज जो हुकूक की आप बात करेंगे। और फिर देखिए जनाब जो अभी जो अमेंड किए जाए हैं प्रोविजन, उसमें लिखा है एज नियरली एज में भी, एज नियरली एज में भी। उसका क्या मतलब है? ये एम्बिग्यूटी क्यों है? ये जो आप करना चाहिए, जो खाब बेचना चाहते हैं आज आप अपनी दुकान से आप कल लाने वाला सौदा वो आज बेचना चाहते हैं, जो मर्चेंट दुकान में मौजूद ही नहीं है। देखिए ये एज नियरली एज पॉसिबल की क्या बात है और डेफर करने की क्या बात है? तो जनाब कुल मिला के जो अगर हम जो जनाब जो बिल का जो आइडिया है विमेन एम्पावरमेंट, आइडिया है विमेन पार्टिसिपेशन, जो रिप्रेजेंटेशन, अगर वो आइडिया है उसके साथ हमें, लेकिन जिस तरीके से फ्रेम दिया जा रहा है, जिस तरीके से ये शराब दिया जा रहा है। अब जनाब एक और बात है, अगर ये हम मानते हैं कि ये एक जेंडर जस्टिस का जो हमारी कल्पना है, हमारी कमिटमेंट उसका एक हिस्सा है, तो जनाब फिर क्यों ओबीसी को डिप्राइव रखा जा रहा है, माइनॉरिटीज को डिप्राइव रखा जा रहा है? तो इसमें अगर आपका ये प्रयास है, संजीदा प्रयास है, कोशिश है कि नहीं जो अनरिप्रेजेंटेड है, जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो अंडर रिप्रेजेंटेड है, सबको हम इसमें इंसाफ दें, तो सारा मुकम्मल इंसाफ देने का प्रयास क्यों नहीं? तो जनाब जब डिवाइस नहीं। अब जनाब जम्मू कश्मीर की बात देखिए, आप 2026 का आपका डिलिमिटेशन का था सारे मुल्क में प्रोग्राम, वहां क्यों प्रिपोन किया और वहां क्यों पैरेंटेशन किया जिसकी इजाजत आई नहीं? जनाब अगर संजीदगी होती और अगर इनके मन में जनाब होता है कि नहीं नेकी होती जनाब
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Dr. Jitendra Singh to resume. Sir. When I left, we were talking about some statistical figures. As I promised in the beginning, I shall talk only science in science and not and let the House decide. So picking up from my last observation, there is a 142.68% increase in the space budget between 2013-14 and 2023-24. If in 2013-2014 it was 5,168 crore and 96 lakh, this year it was 12,543.91 crore. I agree with what was being said, that there was activity happening earlier also, and private participation having earlier also. But as I said, the figure was so dismal. Only 4 space startups in 2014. Today we have 150. And that has been possible because a new arrangement was set up. An interface was set up, which is known as InSpace, which facilitates the engagement of industry. And it is headed by a non-government person, a person from the corporate sector, who is presently heading. At the same time, a PSU was also set in, called NSIL, New Space India Limited, in order to engage in collaborations. And this is what has given the outcomes, a multiple or investment. So there is a huge synergy now between research, academia, startups, and industry. And in certain ways and in certain projects, industry has quite a meaty contribution. Then I was, which is just where our budget that has been envisaged for 5 years in Anusandhan National Research Foundation, you'll be glad to know as much as 36,000 crore, almost 70%, is going to come from non-government sources. And this has happened only 6 months back. I don't have to say who was the Prime Minister. And this will pave the way for greater involvement of the industry, because I personally also believe the time is gone when there used to be a demarcation, private and public sectors. And we have grown further from where we are. And as the Honorable Prime Minister keeps reiterating, the Amrit Kal at the end of 2047. And if we have to be a global player and decide a global leadership for us, we have to meet the global challenges, live up to the global parameters, and have to have the global strategy. Now, this National Research Foundation was a concept being practiced in US and also some of the European countries. Why have we to wait for 6 decades and all the prime ministers in between? I leave it at that. Now, as the foreign engagement is concerned, or the other, it was said that the satellites were being launched earlier also. Yes, I'm not denying what is true.
I'm only adding to the half-truth said. The total number of flights, because this process, yes, it first happened in 1990, till date is 424. Now, what I'm trying to say, the next sentence is interesting. Out of 424 satellites launched since 1990s, as many as 389, more than 90% launched in the last 9 years. Which was the government, who was the Prime Minister? We have so far earned 174 million US dollars from the launching of the foreign satellites. Out of these 174 million US dollars, as much earned only in the last 9 years. Which was the government, who was the ruler, that I don't have to spell out. The figures speak for themselves. Out of the European satellites launched so far, last 30 years, million euros, out of which, interestingly, out of 256 million euros, 223, almost 90%, earned in the last 9 years. Which means the scale has gone up, the speed has gone up, and therefore, there is, as I said, a huge jump that has happened. Now, I think credit should be given to our scientists and the kind of patronage, as I said in the beginning, and was very well being also put out by Honorable Jairamji. We had scientists like Sarabhai, brilliant scientists, Homi Baba, another brilliant scientist. He came to India for a vacation or a holiday, and the war broke out. He couldn't go back. By that time, the independence was in the offing. Then he stayed back. But nevertheless, the point is that we had to wait all these years for so many things to happen, which could have happened earlier. I'm sure somebody would analyze why this couldn't have happened earlier. If we had the human resource, what was lacking? What did not happen has happened. And what could have happened, why didn't it happen? Now even, and of course, the acumen was so much, and I'm saying so also because the people should know and appreciate. Our Chandrayaan has cost us just 600 crore. Whereas the simultaneous lunar mission, which did not prove to be successful, cost just 16,000 crore. So our scientists working in huge financial constraint admirably made up for that by investing cerebral assets. So we might be lacking in financial assets. So what we were doing, we moved out, took about 20 circles around the Earth, used the gravitational force. It was like driving a car in a neutral gear in order to save the fuel. Then we immediately trajected out, went into the lunar orbit, spent about 40 circles around the moon. It took us about 30-40 days, quite in contrast to the Russian mission that happened simultaneously. But we saved on it. So in the process, I think I have to compliment the scientific community of India. They have given the world the concept of cost-effective space missions by producing missions which are not even 1/10 of the cost of the other missions. Our mission, which was very rightly applauded by Honorable Jairamji and others, has cost us just about 380 crore. So what I'm trying to say is, but which would also, I think, on the other side, give us an idea that if we did not have the constraints that the scientists were confronted with, they could have gone much higher. And that is what has been sought to be provided in the last few years. It's not giving credit to anybody or taking credit to anybody. The processes were there, but they have been sought to be given a new global outlook. Now, if you say, if you go first,
I think the sending up 104 satellites, the world record was set up in February 15th, 2000. First GSLV Mark III was sent up on 5th June 2017. Record number of foreign satellites in single go, 31. Foreign were sent up on, and in 2017, 5th of May, a South Asian satellite, we sometimes popularly described as SARC satellite, which is catering to all kinds of inputs to the neighboring countries, including Bhutan, Nepal, Bangladesh. Unfortunately, Pakistan chose to remain out of it to its own disadvantage. So we are now in a position also to provide inputs and useful information to the neighboring countries, very much in the spirit of Atmanirbhar Bharat and also in the same spirit of Sin Maitri, a country which hardly had the concept of protective healthcare. Even if we fell sick, we leave it to God. If you get well, it is mother's blessing. If you don't get well, it is Pichle Janam ka karma. Because of our, maybe also partly because of our socio-economic constraints. Even the concept of healthcare was not socially commanding that kind of, or culturally commanding that kind of priority. That country today has become a leader in protective healthcare. Vaccine and the benefit of the other countries. Very in the last 8-9 years is that we have not confined ourselves only to the launching of rockets. Rockets catch nations' fancy, as they did. The entire nation was glued to the screen when this landing happened. And that again, also because the gates had been opened up. The whole country took it as their own mission. Earlier on, what happened? You had a launching in the remote corner of a newspaper column. You would see a single column news, Sri Harikota. You could not make out even where the Sri Harikota was located. Now we are getting tourists there. We are getting visitors there. We're getting boys and girls. We had 10,000 spectators to watch Aditya launch in comparison to just 10 of the team members we used to have in 2014. And from all sections of society. So if we have to move on, as I said, in a synergized manner, we have to involve. This has to be whole of government plus whole of nation effort. And that is precisely has happened now, which has led to the generation of knowledge resource. Not only confine ourselves to the launching of rockets, space technology today is being applied virtually in every sectoral development projects or every sector. And I have no hesitation to say that space technology has entered every Indian household. Some of us may not realize that it has already happened. Floods and disasters, of course, we are ahead of others. Somebody other day said, what would be the benefit of spending 600 crore on Chandrayaan? Many of us don't realize the amount that has been saved by averting disasters through space technology is much, much more than the amount spent on Chandrayaan. So in the age of figures, statistics and evidence, I can't say I'm saying so, that's I'm true, or anybody else says so. And it's also gone are the days when I would say I'm more experienced and wiser than you, or I'm more gray-haired. Today... Sir, I don't see... Sorry, sir. I see gray... Available in the market today. Sir, with you, person like you, inspiring chairman, I think
motivates everybody to use the kind of color he or she wants. For gray hair, you can look to Jairam Ramesh. Complete gray hair. I can share some with him. Emulated in the rest of the world also is our Swamitva program, which, as I said, this is working through whole of government. We have the rural development department in that, the revenue. This is mapping of the land, mapping of the farms, using space technology and drones, which brings in more of transparency, less of corruption. You don't have to make rounds of the revenue officer. You can yourself access it. And I think out of nearly 6 lakh inhabited panchayats, almost 3 lakhs or so are completed through this program. The railway tracks laying and the unmanned railway crossings. Telemedicine, of course, I don't have to mention. Agriculture sector. Virtually in every sphere of life and every sphere of sectoral development, we have the space technology now. I think time has come, as I agree with most of the members who very optimistically concluded it. The measure of our success is always relative. The Einstein theory has survived on that. So what is important is, as was being mentioned by someone, that US landed a human being in 1969. True. If you recall, and those who are the keen watchers would remember, Neil Armstrong landed there, took a stroll. BBC captured a film. That was the main news agency those days. And he made a famous statement which has gone down in the history. He said, one small step for man, giant step for mankind. He said so, no doubt. But he couldn't notice the presence of water, even though he had a stroll around. It was our Chandrayaan which later on went and got the evidence of the water molecules, the H2O, which could give a direct or an indirect indication of the possibility of human habitat. और सभापति महोदय जो कहानियां हम सुना करते थे तस्वुर में कि चांद पर क्या होता होगा, लोग बसते हैं कि नहीं बसते, बसते तो कैसे है, वहां पे परियां नाचती होंगी, उन पहेलियों का वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने की प्रेरणा अगर किसी ने दी तो हमारे चंद्रयान ने दी. And I think also one of the best examples of combining our traditional knowledge, which is our asset, with the most modern cutting edge technology. विमान का नाम चंद्रयान, जहां वो पहुंचा वो शिव शक्ति, लेकिन जो उसकी इनपुट्स आ रही हैं हमसे भी कहीं पहले नासा उपलब्ध करवा रहा है, because that's a virgin area, virgin territory. Nobody had ever ventured to have. So even those agencies we started much before us. Now that takes us to the other inference. We are today at par as far as science, technology, innovation capabilities are concerned with any other country of the world. In some spheres, we have even moved ahead. Television happened in USA in 1950s. All the London members of the upper house know that in 1960, the famous presidential election was finally determined by the outcome of a TV debate between John Kennedy and Richard Nixon, which turned the tables against Nixon. We in India did not have a clue about what is all this about. What is TV? What is debate? How does it happen? We saw TV for the first time sometime close to 1970, that to a weekly Chitrahar. Which government, which head of government, I'm not saying. Today, even computer came 15 years later. Today, quantum technology, the latest cutting-edge technology. We are among 5 or 6 countries in the world which are into it. We are among the first who have mission quantum technology launched just 6 months back, under whom I need not say. And we are at the same level, R&D level,
because in scientific projects, you have different levels. We have not yet gone into application level. But if they are in the research and development, we too. Otherwise, what would happen? Television would have become popular in America. They would have indulged in TV debates for elections. And then we would suddenly waken up to something called this new discovery. Similarly, in space technology, as has been said, we are already among the first 2 or 3. Now comes the space economy. Space economy is not something I can boast of. But I do have the courage to say that this is a cumulative effect of the last 60, 70 years since we have started. Today, we are only 8 billion space economy. I am very humbly, modestly admitting it. But our projection for 2040 is 40 billion. So if since 1960s, as was being said, till 2000, second decade or third decade, we reach 8 billion. In the next 15 years, we'll reach 40 billion. But back. The report says that India could go up to not 40 but $100 billion economy by 2040. In other words, my own projection about myself is lesser than what the others are thinking about, which means the world today has recognized the quantum jump that India has undertaken, the fast track in which is moving. Now our startups, as was being mentioned by some other members, in 2014, we were only 350 to 400 startups. Which government? All members are learned enough. In 2016, Stand Up India, Start Up India policy was launched from the ramparts of Red Fort, announcement made in the Independence Day address by the Prime Minister. Within a few years today, Honorable Chairman, sir, we are 1,25,000 startups. More than 110 unicorns. And what I'm not saying, the ruling party not saying, the Treasury bench has suddenly jumped up to the 3rd position in startup ecosystem in the world. Now, if it has happened now, how can we help it? But if it has happened now, something must have been created, some enabling provisions might have been created. Similarly, in Global Innovation Index, again, not mine, not yours, internationally determined parameter and recognized. In 2013-14, we were 81 position. Today, we have jumped 41 positions and we are at number 40. Now, is this not a matter of pride for each one of us? And when we talk of space economy, we can foresee the space economy is going to be a major contributor in India's future economy as well. And we have jumped. 1 second. Honorable members, I have got an input from some members in writing. They say many of us feel it is so cold. One thing is very good. The Secretary General will take steps to moderate the temperature. And another significant facet, we are not generating heat. We are in full collaboration. The Honorable Minister must have been a very serious student of Shakespeare. He, in his speech, has taken to Julius Caesar, and our Jairam Ramesh has not interrupted him. Please go ahead. Temperature. Right, sir. The Aditya is going to study this part also. The thermal aspects
the magnetic aspects and the solar aspects emanating from the sun. How effectively could the possible harmful effects be avoided, and to what extent this could be put to advantage for those living on planet Earth. So coming back, Global Innovation Index and International Index, we have come up 41 positions in 9 years. We are today 5th. And I think in many quarters, people also feel rejoiced that we are now launching US satellites. What I'm trying to say is that the now world looks up to us. Others. Today, the world is ready to be led by India under Prime Minister Modi. Biotechnology. Now, how can I say, unless the Prime Minister changes, I cannot help it. You have to accept it.